Hello. Am I clear here at least? This class app was a disaster. I will take them. I will take the topic to the theme. Let's do here at least. Just give me 5 minutes, guys. मैं जरा लोगों को है ना वो link दे देता हूँ because they all wanted to join, and then because of the stupid app, when you pay so much of premium and still you don't get desired output, it's very irritating. It spoils my reputation also, and it wastes all your time also. Unfortunately, we wasted some for 35 minutes and we have achieved nothing. Just give me 5 minutes and let's begin. I will start everything from the beginning again, so you all have not missed again anything. And in YouTube everybody will be able to see. There is no other thing is required. Yeah, the sessions will be recorded once again, and please don't worry. There's a lot of issues, my god, and I paid so much of premium to this company. ठीक है, I have given links to almost everybody. Amazing. चलो ठीक है, we have a good number of people. Now is it very clear? Just give a thumbs up. And Zoom link, Rushabh, is very expensive, and it just allows 45 minutes per session, and it's very irritating also. It keeps cutting, and then sometimes they even charge you for GB that has been used. But okay, we'll figure it out. Yeah, Priyansh, it will be recorded, don't worry. So I will again so now I'm just keeping it for the recording. Yeah, people are started joining it in a very quick session. Fair enough. Okay, guys, we start again the entire discussion. My name is Yogesh, and we had met in the exhibition. Few of are my old students and already the user of YTS system. How I'm different from others is that lot of time whenever we see trading, जब भी हम trading देखते हैं, हम
काफ़ी लोगों को ये सुनते हुए दिखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम इज़ डेली टाइम फ्रेम। फिर वो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, देन दे विल टेक यू टू 15 मिनट्स, एंड व्हाट हैपेंस इन दैट प्रोसेस, you are 24-hour glued only on screen full time. Either you are taking trading, either you are just doing trading all the time, और हम ट्रैवल करते रहते हैं, हम कहीं पे भी घूमते रहते हैं, हम खाली ये देखते हैं अपने आप को कि हम खाली फुल टाइम स्क्रीन पे रहते हैं, विच इज one of the most worst way of trading any strategy, because what happens, markets are not same all the time. So हम छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही ट्रेड करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स एंड ऑल विल शो यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स बिकॉज दे आर डूइंग मोमेंटम एंड ऑल, but the worst part is they don't know the momentum was already decided on the higher time frame. It just reacted on that day, and you are just trading on that reaction time. अगर हम थोड़ा सा और भी हायर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करें, तो what will be the best thing? We will already know that what's going on in the market and understand the price action before only you are trying to do anything. Okay, what happens again, I will explain you once again the entire strategy. हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टॉक्स जो है, हमने एक बार उसे बाय कर लिया, हमने उस पे स्टॉप लॉस लगा दिया. वंस वी हैव बॉट द स्टॉक, वी हैव पुट द स्टॉप लॉस. व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? लेट द स्टॉक कीप परफॉर्मिंग. इन विच वे? Fundamentally, that is quarter on quarter result, year on year basis, and let the sector also keep perform every single time. Okay, now sectorial analysis also I will explain to you all guys. I will explain you how to take trades on the higher time frame. हम ये ही चाहते हैं कि हम हमारा टाइम हमारे फैमिली के साथ हम दूसरे काम भी करें, and the best part is the more and more you are on higher time frame, the lesser and lesser the noise will go. ओके, हम ये नहीं चाहते हम ट्रेड लेने के बाद हमारा RSI 70 से नीचे जा रहा हो, स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन वो क्या कर रहे हैं 70 से 69 आ गया, तो हम क्या करेंगे? डाइवर्जेंस ड्रॉ करेंगे. Lot of people exit in divergence in panic, but if you see the stock has already rallied more than 100% above that. Okay, other thing, we don't want to more be dependent on tips. हमें tips चाहिए ही नहीं market में. I am trying to going to make you an independent trader who is analyzing 12 months, 6 months, 3 months and taking a trade on monthly time frame, which is the best that you can do for yourself and for your family. Other worst thing that can happen in trading is on the lower time frame. हम जब भी ट्रेड करते हैं, आज हमने ट्रेड लिया, हमने स्टॉप लॉस डाला और हम चले गए, अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे मार्केट खराब हो जाता है. ओके, बिकॉज फर्स्ट आपने स्टॉक्स अच्छी तरह से एनालाइज नहीं किया, यू नेवर गॉट अ टाइम टू एनालाइज, बिकॉज RSI इज मूविंग अबाउ, MACD इज मूविंग अबाउ, स्टॉकिस्टिक इज मूविंग अबाउ, EMAs आर मूविंग अक्रॉस. यू डोंट हैव टाइम टू एनालाइज द स्टॉक. आपको पता ही नहीं आप क्या कंपनी में पैसे डाल रहे हो. Second thing, you are not even able to understand the price action because you are trying to analyze a specific stock on a specific day itself. तो हम जब बायस्ड हो जाते हैं स्ट्रेटेजी से, हमें हर कोई चीज अच्छी लगती है. योर ब्रेन सेज व्हेन यू आस्क, अच्छा ये सेटअप परफेक्ट है, ले लो. व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन इज फंक्शनड इन सच अ वे, because you are trading on an intraday basis or on say monthly to Friday basis or today or tomorrow, your brain is functioned in such a way that हमें सब कुछ सेट अच्छा ही लगता है, चाहे वो सही हो या ना हो. We always prefer to you know get biased to it. So what I'm going to present you today is YTA system of mine, which we are going to analyze on a higher time frame, that is 12 month, 6 months, 3 months. We are going to trade on a monthly time frame. Okay, that means हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट ट्रेड आइडेंटिफाई हो फर्स्ट मंथ में, हम ट्रेड करेंगे अगले महीने में, विल टेक द ट्रेड, पुट द स्टॉप लॉस एंड फॉरगेट इट. नाउ इमेजिन योर स्टॉप लॉस इज नॉट हिटिंग, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ के बीच में, क्योंकि आपने फर्स्ट मंथ तो एनालाइज किया है स्टॉक को, सेकेंड मंथ में आपने ट्रेड लिया है.
तो सेकेंड और थर्ड मंथ में क्या आ जाएगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर आपने सेक्टर से ही पकड़ा, आपने स्टॉक अच्छा फंडामेंटल अंडर वैल्यूड थोड़ा बहुत एनालिसिस करके कर लिया, उसमें आपने मंथली ट्रेड लेके अच्छा सा उसको गैप दिया है, एंड इट इज नॉट टेकिंग योर स्टॉप लॉस। इफ सेक्टर टेल विंड कम्स, कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दे दिया ओवर एंड अबाउ एक्सपेक्टेशंस बिकॉज योर सेक्टर वाज गुड, तो 3 महीने ने क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने अच्छा दिया, वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टॉक टू गो? यू टेल मी, अप और डाउन? Exactly. It's known as confirmation bias. So we are giving the stock lot of time to perform for us. So after we are going to trade the stock, the the pressure of performance of the stock is not on us. It is the performance, it is the pressure on the stock to perform for us. Why? Because हमने हमारा काम कर लिया, हमने स्टॉक एनालाइज कर दिया, क्योंकि फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के बीच में हमें हमें शायद 15 दिन मिल सकते हैं, 10 दिन मिल सकते हैं टू एनालाइज द स्टॉक. So there are so many free websites are there available easily. Trendline, Screener, there is HDFC Bank's reports, Axis Bank reports, Crisil reports that comes for free. We don't need to even pay a single rupee. Your own brokers will have free reports. Read it. It is okay to read. Unfortunately, we read charts, but we are not ready to read about the company that we are putting the money in. क्या पता आपको ये पता चल जाए that you don't like it. Once you become my advanced student and all, I will help you. I will teach you how to take all the con call sheets and how to take all the annual reports and put it into the AI and get what we want as a output, and then you can decide whether you want to invest or not. And the best part about trading on a higher time frame is simple trading with no noise. On Friday, Saturday, Sunday, when your family is asleep, switch on the AC, switch on the TV, and all you have to do is analyze it without bias. When the charts are closed, that is EOD, that is end of the week and end of the month, the chart tells you everything. But when we are analyzing on a live market, chart doesn't tell you anything. It just keeps on irritating you because हमें सब कुछ बढ़िया लगता है उस टाइम फ्रेम पे. Okay, so let me present to you my YTA system right now. Just let me see is somebody still having problem or not. Okay, I'm just again pasting them. Okay, so now let me share the screen, entire screen. Now please tell me, can you all see my charts properly? Fabulous. So all okay right now. Is the charts okay? Can you all see the charts? I'm just moving back into live streaming, so at least I know what people are saying, yes or no. Okay, yes, fabulous, wonderful. So we are at the right track. Okay, so हम क्या कर रहे हैं ये strategy से? Okay, the most important indicator that I have is my fundamental tool, which I will just make it little bit large अभी बताने के लिए. Can you see all this fundamental tool? Okay, तो ये क्या बता रहा है कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स है, उसके सामने कंपनी पीई क्या आस्क कर रही है, and what is the company net income. Okay, now if you see the simple thing, हमें क्या चाहिए, कंपनी की नेट इनकम बढ़ती रहनी चाहिए. Okay, quarter on quarter we want net income to keep rising. If the net income is rising at a faster pace, fabulous. If the net income is rising at a slower pace, that means the stock will also keep moving at a slower pace. लेकिन अगर net income बहुत fast speed से बढ़ रही है, then there are chances that stock will only rocket up. Okay, now if we see what happened in Apollo Microsystem company के net income में, guys, what I'm going to tell you is ये जो data लिया गया है, we don't punch it manually. ये सारा data trading view का ही है, we just break it up into our strategy. Okay, so is there is any कि सर कंपनी तो नेट इनकम ये दिया है, आपके सिस्टम ने तो ये दिया है, then we do just to for a disclaimer that we don't put any manual data.
that question you have to mail it to TradingView, why they have taken. They will give you an explanation. Okay, so we just break what data has been provided us by the TradingView. Now if you see, in March 2024, 1st March 2024, company was making an income of 311 million. Okay, अब जून क्वार्टर में क्या हो गया, कंपनी मेड एन इनकम ऑफ 379 मिलियन. तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज कितना हुआ, 22%. एंड लास्ट जून से ये जून का मोमेंटम आया 101%. सो कंपनी गेव अ बेटर रिजल्ट बाय 101% देन लास्ट ईयर ऑफ जून 2023, जिसका डेटा नहीं है. आई जस्ट पुट 6 क्वार्टर्स ओवर हियर, बट आई विल कीप गोइंग फर्दर. नाउ व्हाट हैपेंड in September 2024, the company net income grew to 470. Now can you see, from 311 to 380, now direct 470. तो देखो यहाँ पे वापस 24% की क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट बेटर आया. कंपनी हैज गिवन 113% better result on year basis. Okay, now December quarter, the company from 470 gave 554, then it raised to 564, then it raised to 665. Now if you see 6 quarter में, the first quarter, the base quarter, the company was giving you a net income of 311. Within 6 quarter, the company has doubled or not in net income? Yes or no? Company doubled its income. Simple. और उसके सामने look at the PE the company is asking. At 311 million, the company was asking PE of 85, but at double the income, PE has just rose by only 4 points. Am I clear? Just 4 points it has risen. तो क्या हो गया, कंपनी लोग क्या फील करके, बॉस 311 मिलियन में मुझे 85 पीई पे मिल रहा था, आज कंपनी 665 मिलियन कंपनी, मतलब उसने इनकम डबल कर दिया, लेकिन पी मुझे अभी भी वैल्यूएबल मिल रही है. दैट मींस द पी हैज नॉट एक्सपैंडेड वेरी हाई. सो कल उठ के अगर ये कंपनी 1200 मिलियन में कमाएगी, और अगर पी एक्सपैंड हो गया, दैट इट गोज टू 100 पी, तो ये स्टॉक कहां चला जाएगा, ये रॉकेट हो जाएगा. सिंपल. Why? What is PE is nothing but the number of years it will take for you to earn the particular price. P is nothing but price upon earning. How many times the person is ready to give for every 1 rupee earn. Okay? तो अगर मुझे ये कंपनी खरीदनी है, तो वो हम उसको कितना टाइम्स आज पैसे देने के लिए तैयार है एट द करंट इनकम. सो हर कंपनी का पी अलग अलग होता है. सो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग. ओके, तो मैंने क्या कर दिया, इसको खाली अंडर वैल्यूएशन में मैंने डाल दिया. दैट मीन्स पीपल आर स्टिल रेडी टू पे द करंट पी एट द करंट इनकम. ओके, बट डज दैट मीन हम, आई विल टेल यू Parik bhai ke why it is mixed. Okay, right now you just stay with me so that you are very clear. Now क्या हो जाता है कि कंपनी जैसे टाटा मोटर्स में ले लेता हूं. ओके, नाउ लॉट ऑफ पीपल विल से कि टाटा मोटर्स गिरा क्योंकि स्टॉक 200 रुपए का था, अब 1200 हो गया, तो ये और कितना ऊपर जाएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही आनी थी, विच इज अ रॉन्ग लॉजिक. ओके, now if you see in this clear indication, the company was making 313 million income at 12p, फिर ये 337 million बनाने लगा at 11p, then 333. now if you see from June quarter, the company net income kept on decreasing. Can you see, from 313 million, company currently is making only 211 million. लेकिन मेरे सिस्टम ने आपको पहले ही बता दिया था एट द मंथ ऑफ सितंबर 2024, भाई प्लीज कीप अ आई ऑन दिस कंपनी. वी डोंट हैव टू पैनिक ऑन द फर्स्ट ओवर वैल्यूड, बट इफ द कंपनी इज गिविंग यू 2 ओवर वैल्यूएशंस back to back, with what? The company is coming with a lesser net income. Can you see, from 337 million the company has come to 317 million.
तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन आना शुरू हो गया कि भाई ध्यान रखो, जस्ट बिकॉज इट इज टाटा मोटर्स डज नॉट मीन यू विल कीप होल्डिंग इट। दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आए जहां पे even at 8p the earning has deteriorated, it is giving you negative returns in net income। तो बॉस ये ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। एंड सी, नॉन स्टॉप 4 ओवर वैल्यूएशन आने के बाद even the company started impacting on year basis overvaluation। तो what क्या हो गया? The stock started feeling the pressure। Am I clear why it is coming different into different time frames? Okay, so it's very simple to understand। अगर net income, let me just do this, yeah, अगर net income बढ़ती रहेगी from previous quarters, okay, and at a higher speed, but P will rise at a very small pace or P will go down when the price is going up, when the net income is going up, तो ये आपको बताएगा अंडर वैल्यूएशन। एंड देयर आर हाई चांसेस इन दिस कंडीशन व्हेन नेट इनकम इज गोइंग वेरी फास्ट अप, P is going very slow up, or it is falling down, the stock will perform like a rocket। Okay, on the other side, if company's net income is falling and P is going shooting up, okay, then there are higher chances that the stock will start falling। Why? What happens in this logic कि कंपनी तो लॉस कर रही है लेकिन वो एक्सपेंसिव बन रही है। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। किसी ने कहा है कि एक और एग्जांपल बता दो, ठीक है, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। आई विल फाइंड अ गुड वन। या, सी डाबर इंडिया। डाबर इंडिया इतना अच्छा रैली किया फ्रॉम सो एंड सो, बट currently from past 2021 the stock has given you no returns। okay, it's in a flat zone। तो कितने साल हो गए डाबर कंपनी को? 4 साल हो गए, कंपनी हैज हार्डली गिवन एनी रिटर्न्स। इट्स एट 650 रेंज से लेके 400-500 की रेंज पे खाली वो घूमते रहता है। नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट डाबर जैसी कंपनी क्यों ऐसा कर रही है? सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। नाउ सी, the stock at March 2024, the company was giving you the returns of the net income of 18,427, जिसके सामने वो P it was asking at 50। Now suddenly quarter on quarter 2% increase हुआ, but P shot up even more higher कि बाबा मैंने इनकम तो 2% ही बढ़ाया है, लेकिन what is the percentage in increase of P ratio is much more higher than the net income increase। okay, now in September 2024 if you see, the net income is decreased and P is still rising at a higher pace। now P rose by 20% from 50 to 61, P 20% shoot up हो गया, लेकिन net income तो बॉस नेगेटिव आई है तेरी। on what basis are you getting expensive? now from 18,000 to 17,000, or we can just say March to March, ये पकड़ लेते हैं। okay, March 2024 से March 2025 the company has given a 4% negative returns, but P has rise from 50.37 to 50.89। if my company is giving me less income, तो मैं P बढ़ा के क्या करूंगा? मुझे तो P नीचे जानी चाहिए। so that is where it is feeling the heat and that's why डाबर इज नॉट फ्लाइंग। तो डाबर को अभी क्या करनी पड़ेगी? अगर मैं 50p मांग रहा हूं लास्ट ईयर से, तो मेरा नेगेटिव 4% था, तो अगर मैंने 55 कर दिया तो मेरा से नेट 5% के आसपास मैंने पी बढ़ा दी मेरी, तो मेरे स्टॉक को एटलीस्ट 20% से नेट इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो जो डिफरेंस है पी और नेट इनकम में वो स्टॉक उसको कवर करेगा। समझ रहे हो? And that's why people don't get this logic of P versus ये। they say अरे 20 रहेगा तो बेस्ट है। नहीं बॉस, अगर नेट इनकम कमा रही है कंपनी तो उसको P क्यों नहीं मिलेगा? okay, and that happens in a small companies, not in a big companies।
ओके, बिग कंपनी में तो 25 के ऊपर जाएगी तो थक जाएगी, क्योंकि वो कंपनी देती है 12 से 15% रिटर्न, बिकॉज इट हैज बिकम द पायनियर इन द कंपनी. ओके, यू विल नेवर सी रिलायंस इंडस्ट्रीज गिविंग नेक्स्ट क्वार्टर 100% इनकम. वो 10-12% पे ही घूमती रहती है. दैट्स वाई पी 20 इज परफेक्ट फॉर देम. बट व्हेन वी सी अ स्मॉल कैप कंपनीज, दे गिव last quarter से 40% net income higher, they give 100% net income higher, they give 120% net income higher, and they even go lesser income in that percentage only. So suddenly when net income is dipping but P is shooting up, the stock will duck. But if net income is rising at a higher speed but P is going at a slower pace, the stock will only rally up. And that's what we want to see in our stocks. Okay, so same thing happened in Apollo Micro. सिंपल, व्हाई दिस रैली केम नोबडी नोज. हाँ, आ गया रैली, आ गया रैली. अरे क्यों आया रैली बॉस? 75% से तुम्हें, सॉरी, लेट्स दिस टेक्स दिस मार्च टू मार्च. फ्रॉम मार्च टू मार्च the stock gave a rally of 81% in net income in 1 year. And what happened to the P in the same era? 85 PE का 64 PE हो गया. मतलब net income rose but PE went down and the stock rallied. Did you get it, guys? Simple logic. No, it's not cheaper, Dhruv, or something like that. It's just that people are willing to pay that price. Okay, we can't say cheaper or ये. Logic सिर्फ इतना बताता है कि अगर PE drop हो रही है and net income is rising, there are higher chances people. अभी देखो, सोने का भाव है अभी 1 लाख, समझो 1 लाख रुपए का सोने का भाव है, सडनली वो 80,000 का हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ द गोल्ड इज अमेजिंग, सो विल यू नॉट गो एंड बाय क्योंकि 20,000 सस्ता हो गया. And when it goes to 120, 125, you will stop buying even if it is good. The same thing is the stock market. If the net income is rising amazingly, if the product is your net product is net income, so the net income is increasing, it is increasing its value, but P is dropping, तो आपको सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है. तो ऐसे मत नंबर दो कि ये चीप है या ये है. ऑल इट्स ट्राइंग टू से दैट द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन इट्स नेट इनकम. उसने 6 क्वार्टर में डबल कर दिया अपना इनकम, बट पी ड्रॉप हो गया, देन पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन इट. सेम वे. बट अगर ये समझो कि कंपनी आपको रिटर्न्स ही नहीं दे रही है कुछ, ओके, बट मैं आपसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मांग रहा हूं, आई मीन ऐसे कोई बिल्डिंग है जहां पे लिफ्ट नहीं है, पानी नहीं आता, वॉचमैन नहीं रखा, दरवाजा नहीं है, शीशे टूटे हुए हैं, विल यू पे अ मार्केट प्राइस और विल यू पे बिलो मार्केट प्राइस? सिंपल क्वेश्चन है. इफ आई गिव यू अ प्रॉपर्टी टू बाय विच डज नॉट हैव एनीथिंग अमेजिंग, there is no swimming pool, there is no watchman, there is nothing, you will not pay the market price, you will only pay below market price. But I am giving you a fantastic, say, building where there are a lot of amenities and there are a lot of good people profile. There is uh, uh, कौन सा, I will check, Varun. Let me first explain this. We will not go in individual question stocks because it will only divert the topic. Okay, so there is a building which has an amazing, everything amazing out there. So will you not give him a higher than the market price? We will. The same thing is with the stock market also. Okay. Yes, Dhruv, that is amazing setup. Even if the P is flat, also that is fine. Okay, and suddenly when net income और बढ़ती जाएगी, suddenly P expand हो जाएगा, तो stock उसमें भी rally करता है. But PE dropping and net income rising at a faster pace is an amazing setup to watch. Okay, that is one of the indication that you can keep into your mind. Or even if the net income is rising but PE is also increasing gradually, मतलब अगर net income 40, 50, 60% से बढ़ रहा है लेकिन PE is increasing 10, 15%, that is also a good sign. Okay, so net income बढ़ने से stock expensive नहीं हो रहा है, price बढ़ रहा है. Price is not the criteria of valuation. Okay.
What is it saying, sir? But your explanation and system is applicable to it. Once for 1 minute, please check. I am not invested, but okay. Jindal drill he'll want to see. Okay, I'll just check. Okay, this is the last we are taking as a individual thing, but I don't want to divert my concept. See this company. क्या हो रहा है उसमें? Company worth 500 crores, 511 million was available at 36. The company has jumped the net income to 2,300 and it has gone only 7p. Okay. Now imagine too much low p, anything below 7, 6, 5. That means market is leaving any expectation in future. Okay. अगर 7 तक पी रही fantastic. If p falls below 5, 6, then don't even bother about the company. Now if you see sectors like paper industry के p रहते खाली 5, 4, 3, 2. Why? There is no expectations from such kind of companies in the market. So this company has fallen down drastically from 36 to 7. Okay, and it falls below 5. See, and that's why this is trying to fall. Okay, there's good stock found, Varun. तो ये क्या हो जाता है? कंपनी एक्सपेक्टेशंस छोड़ रही है. पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन सच टाइप ऑफ कंपनी जहां पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ना हो. सो इफ इट फॉल्स बिलो 6, then forget about this company. It will just go sideways. So company should be either between 7 से लेके higher. uh, See, because very low P also means there is no expectations from the stock. So P का बोलता है कि कुछ तो मोमेंटम होना चाहिए. अगर अगेन आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन. जैसे गुजरात में आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हो फॉर अ लॉन्गर टर्म, और से बड़ौदा और सूरत, if you buy a property worth of 1 crore, even after 5 years you will sell the property, there is no much appreciation. So would you like to buy such kind of properties in such kind of cities? No. But in properties like Hyderabad, Bombay, Delhi, Noida, uh, then say Chennai, in all these areas the momentum is faster. So हमें कुछ तो growth perspective दिखना चाहिए. Otherwise there is no point of investment when the growth is only not there. So too low PE means that growth is also flattening. Too very high PE is also growth is becoming over expensive. So it should be in a very fantastic range. Okay. When the markets are exceptionally bearish, okay, जैसे अभी bearishness है market में, avoid putting money where it is more than higher than mid cap company or semi mid cap above 50,000, 60,000 company. Avoid putting money in the companies which have a higher PE than 40. Okay, you should go little bit aggressive in say higher P's only when markets are at, जैसे वो कोविड का crash आ गया and suddenly it started moving up. तो income बढ़ रही है because of the market is moving better. Business have started and companies are giving a PE of 60, 70 is fine. But market is the extremely bullish and trying to fall down and it's not able to stable. और हम हमारा पैसा बचाना चाहते हैं. Don't put money where P's are more than 40s. वरना क्या हो जाएगा कि जैसे ही प्राइस गिरेंगे, भले अर्निंग अच्छी है, तो जैसे ही प्राइस गिरेगी तो पी उसका क्या हो जाएगा, री अरेंज हो जाएगा. देन द स्टॉक विल ट्राई एंड कैच दैट फॉल वाला पी. So try to imagine what kind of market you are. Extremely bullish from the bottom to top. Yes, go aggressive above P 60, 70, whatever you want. But when the market is at the top and trying to fall, avoid paying more than 40p in the end. And anything lower than 6p, market is not expecting anything. वो एक flat है. That means the company has to give you extraordinary income to get that PE moving. Okay, so P is a very delusion wala game. So I've just put it in a very simple way of doing it. ठीक है.
Yes, the company which is not earning any net income has no P, so that is negative P. ओके सो कंपनी जो नेगेट जैसे वोडाफोन आइडिया एंड ऑल आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स बट प्राइस मोमेंटम हो रही है बट दे हैव अ नेगेटिव पी सो लेट मी शो यू इन दिस से आइडिया ओके द बेस्ट पार्ट इन आवर सिस्टम इज द मिनट द नेगेटिव पी वाले स्टॉक्स आएंगे देखो यहाँ पे क्वार्टरली और ईयर यहाँ पे कोई वैल्यूएशन ही नहीं आएगी बट पी ओवर सी ओ ईयर नेगेटिव -2 -3 -2 -1 -0 and here there is no valuation so minute if you see there is no valuation that means boss मेहनत ही मत करो first of all we don't want any company which is overvalued which is showing continuously quarterly overvaluation okay and the company which is negative in earning जो profits ही नहीं बना रही उसका valuation भी नहीं आएगा so why you want to even analyze the chart of it see the company is making losses ये खाली breakout करके सबको trap कर दिया people bought at 249 lucky people who had स्क्रीनर्स इन दैट और कैसे भी करके ब्रेकआउट करके 12-10% कमा लिया दे एग्जिटेड बट unfortunately see what happened exactly there is no profits in the company gave a breakout at 250 went till 320 and dump so सारे traders उसमें अटक गए और worst part what happened only not only the company was not making profit now the markets are also not in your favor so stock पे ज्यादा pressure आ गया only if you knew this strategy before you would have never even bothered about breakouts जो daily time frame में volumes दिखते हैं RSI दिखते हैं stochastic दिखते हैं MACD crossing each other but they had no idea what the company is doing this is what I'm trying to tell you know what your company is doing then there is no problem stop loss तो hit होने ही होने there is nothing that you can do okay but at least इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी वेयर यू नो दैट वैल्यूएशन इज गुड तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है कल उठ के मार्केट अच्छा हो जाएगा और आपके पास अंडर वैल्यूड कंपनीज अच्छे वैल्यूएशन पे रहेगी तो क्या होगा मार्केट के साथ आपका स्टॉक भी रैली करेगा which exactly happened in Apollo market because the defense stock was good the company from 300 million went to 660 million or people and PE ratio did not rise so much people were ready to pay 89 PE also at that point of time because entire world is at war तो उनको 89 पी भी अच्छा लग रहा था मेरे सिस्टम ने भी अंडर वैल्यूड कर दिया स्टॉक जस्ट फ्लरिश्ड इन जस्ट 5 मंथ्स 122% बट हम कोई भी स्टॉक पे ब्रेकआउट आ जाते हैं क्योंकि कोई एक्स पे बोल देता है कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है देन व्हाट इज देयर वी हैव टू जस्ट क्राई जस्ट ओके सो डोंट फॉल इनटू सच ट्रैप्स हम हमारा दिमाग तो लगा ही सकते हैं थोड़ा बहुत ओके नाउ लेट्स गो टू द अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी हमने ये लॉजिक तो समझ लिया कि हमें क्या चाहिए इससे ठीक है सो आई विल मेक दिस स्मॉलर okay now another system I want to show you is another logic I want to show you is see delivery is an IPO stock okay so wo when the company any company understand this any company which was loss making company converting into profit making company will people give him more valuation of course they will give you more valuation तो हमेशा any negative company turning into positive उसका हमेशा PE high रहेगा most of the time IPO companies because people expectation becomes so high for them so now it is up to you whether you want to give 148 PE or not simple logic ये है when the markets are dicey avoid giving anything more than 40 PE stock को बढ़ने दो it's okay that is none of our concern but if you are very confident about the sectors and all you want to give you can give it 148 PE also okay Patel ji it's up to you so now what are we going to do is now we going to see one this Bosch में डाल देता हूँ because that's Bosch Limited ठीक है now Bosch Limited में हमने क्या देखा if you notice this indicator okay the stock from
39,154. नाउ कीप फंडामेंटल इंडिकेटर असाइड. ओके, इसका काम अभी कुछ नहीं है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ. सो वी डोंट कीप फॉलोइंग अगेन. सर ये प्रॉप रेड था, ये था. अ स्टॉक फेल फ्रॉम 39,000 टू 26,000. ओके, फॉल आया. बट कैन यू ऑल सी एनी ऑफ द कैंडल्स हैव नेवर टर्न रेड फॉर मी. अगर मैं इसको नॉर्मल कैंडल में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये कंपनी कितने महीनों तक गिरी है नॉन स्टॉप? 1, 2, 3, 4, 5. द स्टॉक फेल continuously for 5 months, and then it moved up and made a new high. But if I put my candle, this thing, I have still not activated this in your account because I wanted to show you. मैंने अभी तक आपको ये एक्टिवेशन नहीं दिया है. मैं आपका कैंडल का एक्टिवेशन बाद में कर दूंगा. ठीक है, मेरे को ये आपको पहले बताना था, उसके बाद मैं एक्टिव करूंगा. अब जैसे ही मैंने ये आपके अकाउंट में एक्टिवेट कर दिया, देखो कैंडल्स, कैंडल फ्रॉम 2022 से लेके आज तक एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है इसमें. ओके, नॉट अ सिंगल कैंडल हैज टर्न्ड रेड. लेट अस सी इन अदर स्टॉक्स. ओके, कोलगेट में देखो अभी रेड बनना शुरू की है. नाउ यहां पे देखो ओलेक्ट्रा ग्रीन, पहले यहां पे रेड हो गई, सडनली अभी ग्रीन कन्वर्ट होने लगी है. बट इफ यू सी ओलेक्ट्रा ग्रीन फ्रॉम पास्ट 2021 से लेके अभी तक 2025 तक, not a single red candle was formed. Okay, what is going on? People are still not able to join even after giving them so many things, and they keep disturbing in between. Okay guys, so okay, now see, the screen has been shared. Now see on this area, if I will object and I will stop this thing. Okay, ये देखो कितने सारे रेड कैंडल्स है. But if I toggle my indicator, there were only this area where the red candles were there. Again, I will say Bosch because some people missed it. Now see this Bosch. If I close this indicator, देखो 1, 2, 3, 4, 5 महीने. Why? Because we are on monthly time frame. 5 months the stock was down. But if I just put my indicator, the stock was not a single day red, single month red. So what it is trying to tell you that even if the stock is coming down on the monthly time frame, it is still in my criteria that there is a possibility that the stock will start moving up one fine day if everything comes to in direction. What happened? Suddenly auto sector started moving, Bosch just moved up. So ये देखो, even after so many months of fall down, the candle was not red at all. Okay, hope you all can see that. No, that I will activate today, so don't worry about it. Okay, अभी आप खाली फोकस करो. ये कैंडल इंडिकेटर मैंने आपके एक्टिवेट नहीं किया, मैं आपका एक्टिवेशन कल करूंगा इस चीज को, बिकॉज मुझे आपको ये चीज दिखानी थी ताकि आप समझे, वरना आप ये नहीं समझ पाते. अभी देखो यहाँ पे कोई भी स्टॉक ले लीजिए, ऑन एन एवरेज ये शारदा, if you were invested in Sharda from say 2021, not a monthly candle is red. But अगर मैं इसको टॉगल करता हूं, this one without my candles, देखिए कितने सारे कैंडल्स में रेडनेस है. सो दिस कीप्स योर फियर अवे फ्रॉम द मार्केट कि ठीक है ना, 1, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना स्टॉक खराब हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे स्टॉक रोज ही परफॉर्म करने चाहिए. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर मंथली टाइम फ्रेम कि चाहे मोमेंटम कुछ भी हो, उसका ट्रेंड हमें पता चलना चाहिए, ट्रेंड कहां पे. तो दिस कैंडल विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई ट्रेंड क्या है इसका. तो कैन यू सी द ट्रेंड इज ऑलवेज अप ओनली. तो व्हाट विल यू डू ऑन द लोअर टाइम फ्रेम व्हेन आई विल टीच यू द स्ट्रेटजी, आप खाली उस पर फोकस करोगे कि लोअर टाइम फ्रेम में मुझे एंट्री कहां करनी है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम तो मंथली मुझे बोल रहा है कि अभी भी मैं ट्रेंड में ही हूं. ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर गाइस? या इट मींस इट इज स्टिल इन ट्रेंड. बाय कहां करेंगे, स्टॉप लॉस कहां करेंगे, मैं आपको अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा. यू डोंट वरी अबाउट दैट. आई एम टेकिंग वन इंडिकेटर बाय वन इंडिकेटर. सो व्हेनेवर यू सिट फ्रॉम टुमारो ऑन द स्क्रीन, यू आर नॉट वरीड अबाउट इट.
ओके, नाउ इसका कैंडल्स का आ गया. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टू अबाउट डॉट्स? ओके, इट इज ओनली फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू ट्रेड ऑन वीकली टाइम फ्रेम. अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम ये दो डॉट को नहीं देखेंगे. इट इज नथिंग बट माय रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू कहां पे गया ये, निफ्टी. यहां पे आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 500 भी कर सकते हो. दैट मींस यू आर ट्राइंग टू कंपेयर योर स्टॉक विथ निफ्टी 500 स्टॉक्स. ओके, ये देखो, ये मैंने CNX 500 कर दिया एंड ओके कर देता हूं. तो ये स्टॉक ये आइडेंटिफाई करेगा, ये इंडिकेटर ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपका स्टॉक पूरे बंच ऑफ 500 स्टॉक्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है. इज इट परफॉर्मिंग वेल और इट इज परफॉर्मिंग बिलो द निफ्टी 500. तो अगर ये स्टॉक इज गिविंग यू बेटर रिटर्न्स देन निफ्टी 500 स्टॉक्स, ये ग्रीन हो जाएगा. एंड अगर ये परफॉर्म नेगेटिवली करेगा, इवन इफ इट इज गोइंग अप, तो इसका मतलब ये है कि मैं निफ्टी 500 इंडेक्स में पैसा डाल दूंगा ना, ये स्टॉक में क्यों पैसा डालूंगा? Why do I need to invest in this stock if it is giving lesser returns than my benchmark? Hey, Manish, the screen has been shared only. You are not able to see. Refresh and come. Okay. So again, I will explain you. क्या करता है ये इंडिकेटर? ये आइडेंटिफाई करता है कि हम बेंचमार्क आइडेंटिफाई करते हैं. से निफ्टी 500, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, nifty, anything you want to select. You can select any single benchmark you want. Okay, I personally use nifty 500 कि मेरा फैमिली 500 का स्टॉक्स है. ओके, तो मेरे निफ्टी 500 स्टॉक, अगर मेरा निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी 500 इंडेक्स ऊपर जा रहा है, मेरा स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा स्टॉक इज नॉट एबल टू आउट परफॉर्म द रिटर्न्स दैट निफ्टी 500 इज गिविंग. से अज्यूमिंग मेरा निफ्टी 500 इज गिविंग से 15% रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर. तो मैंने समझो जनवरी 1 में डाला, दिसंबर तक मेरा रिटर्न्स निफ्टी 500 ने मुझे 15% रिटर्न दिया. मैंने स्टॉक में भी पैसा डाला, लेकिन वो स्टॉक मुझे 8% रिटर्न दे रहा है. तो फायदा क्या हुआ? उससे अच्छा तो मैं निफ्टी 500 में ही पैसा डाल देता था इंडेक्स में, तो मैं ज्यादा रिटर्न्स कमाता. सो इट टेल्स यू कि बॉस, आपका जो प्रोडक्ट है, दैट इज दैट स्टॉक and the benchmark that you have decided, it is giving you higher returns or lower returns. अगर वो दोनों लाइन ग्रीन है, दोनों लाइन ग्रीन है, that means your product, that is your stock that you have selected, is giving you higher returns than your benchmark. और हमें ऐसे ही स्टॉक चाहिए which is giving higher returns than the benchmark. अब ये benchmark can be taken any benchmark you want. अब मैंने यहाँ पे समझो कि मैंने यहां पे ले लिया CNX, ये है, मेरे को यहां पे चाहिए गोल्ड, तो मैं यहां पे गोल्ड डाल दूंगा. तो क्या मेरा ये प्रोडक्ट गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है? यस. हमें लगता है गोल्ड क्या 1000 1 लाख का हो गया, बट अगर मेरे प्रोडक्ट में कैपेसिटी है टू गिव यू बेटर रिटर्न्स देन गोल्ड, then why should I not take risk over here and take a risk on like this here again? Say if I have taken a benchmark here as gold, so why will I not invest in this stock? Because both my indicators are green right now. So it is telling me that my possibility of this stock to give you higher returns than your benchmark, that is gold, is higher. तो मेरे ये स्टॉक ने यहां पे से एंट्री में सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि ये एक एंट्री पॉइंट बन जाता था. आई विल टेल यू व्हाई दिस एंट्री पॉइंट वाज वैलिड लेटर ऑन. एम इज टू मेक यू एक्सप्लेन दिस इंडिकेटर. तो अगर किसी ने यहां पे एंट्री ले ली होती और यहां पे स्टॉप लॉस डाल दिया होता ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, और ये दोनों इंडिकेटर मेरे ग्रीन है या एक इंडिकेटर ग्रीन है, तो ये चांस बता रहा है कि शायद मैं पॉसिबिलिटी है कि मेरा हायर रिटर्न्स देन गोल्ड आल्सो. तो जो ये बंदे ने ये स्टॉक पे रैली इनकम की है, ही विल नेवर हैव अ फोमो, ओ शिट मेरे को गोल्ड में पैसा भी डाल, इसके बदले गोल्ड में डालता. नो भाई, ये आपको बता रहा है
कि आपने जो बेंचमार्क लिया है, जो गोल्ड है, और ये जो स्टॉक ने जो रैली दी है, इट इज फार बेटर रिटर्न्स देन द गोल्ड दैट हैज अचीव्ड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम. डू यू गेट द लॉजिक? क्यों ऐसे स्क्रीन आ रहा है? ओके, डू यू गेट द लॉजिक? बट so aim is to earn better results or returns your benchmark. Okay, so RS period, I have taken 65 period and 123. Okay, so 65 month on the monthly time frame and 123. If you are on a weekly time frame, then it is 65 weeks and 123 weeks. If you are on a daily time frame, then it is 65 days and 123 days. तो मैंने ये दो पीरियड सिलेक्ट किए हैं. ओके, और मैं इसको चेंज नहीं करता. आई डोंट चेंज एनी ऑफ दिस पीरियड. ओह, दैट्स व्हाई. ओके, डन, थैंक्स. सो तो अगर सपोज मैं यहां पे कंपनी डाल रहा हूं, सपोज BYD. ओके, इट्स एन NYSE कंपनी. तो मैंने यहाँ पे BYD डाल दिया. तो मैं ये गोल्ड के साथ क्यों कंपेयर करूंगा? व्हाई विल आई नॉट कंपेयर दिस स्टॉक इटसेल्फ विथ its own index? Say I'm double clicking this. अरे यार क्या हो रहा है? हाँ, double click is this indicator and converting this into index, and I'm typing over here NYSE. So this is an index of NYSE and I'm typing okay. Now see, on the weekly time frame, the index is not performing well, but on 3 monthly time frame, can you see this green dots? So my BYD on 3 monthly time frame is giving me higher returns at this comparatively number. It is performing better than the NYC index. तो मेरा BYD कंपनी उस इंडेक्स NYC इंडेक्स से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है. सो व्हाई शुड आई पुट माय मनी इन NYC इंडेक्स फंड्स? आई विल पुट माय मनी इन दिस कंपनी. इफ द कंपनी परफॉर्म्स और ये green candle ही रहा, that means it is outperforming that particular benchmark index. Okay, so do you all get the logic behind it? So above dots and below dots are nothing but relative strength, 65 and 123 value that I have taken. Okay, now let us go and understand what is this below dots. Okay, this below dots is nothing but it tells you the shift in the power between buyers and sellers. If the pressure of the stock is very high, मतलब वो selling ज़्यादा आ रही है, it will convert into red dots, which will tell you more powers and buyers don't have power. And if it is converting from red to green, so it is trying to tell you that buyers are more into power than the sellers. It doesn't, but I have kept it so that at least I know who is in power. Kal utke, it's the green dots are here and the stock is falling like this. ये नीचे गिर रहा है. Okay, can you see this areas? The price are falling. But the entire area of this from here to here is red only. तो मैं पैनिक में इसको बेच ना दूं. It's okay, the price is falling down, but if my price is above my buying price, but it is just coming back towards the red areas, this red areas, I will explain to you in 2 minutes. If it's coming back into this red areas, I am not in the panic situation and just exiting. मुझे समझ में आ रहा है that buyers are more into power right now. Okay. हाउ टू चेंज इंडेक्स? यू जस्ट डबल क्लिक, वहां पे नीचे जाओगे सेटिंग में, वहां पे एक NSE लिखा रहेगा, वहां पे डबल क्लिक करो, यू कैन चेंज वॉट एवर इंडेक्स यू वांट. ओके, इट्स वेरी सिंपल.
Now let us go and understand what is this buy sell criteria. Okay, is everybody excited to know what is buy sell criteria now? तो हम कल से डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते कि बॉस बाय सेल क्राइटेरिया है क्या मेरा. ओके guys, do you all want any 1 minute 2 minute break? Yeah, so time is right now 3:36. We come at 3:40. Yeah, so Dhruv, the below dots are nothing but it tells you who are in more power right now. What happens a lot of times, the stock is going up and it's coming down. So on the lower time frame, what will happen? EMS will cross, MACD will cross, people will start shorting. Okay, yeah, so let's come back at 3:45. Okay, 3:45, let's come back. Okay, and I'll just explain Dhruv because he is still not understood, but you all can go to the washroom and all and come back. Okay, so what happens, Dhruv, is a lot of people, it's just extra power. Light green means the stock may start getting weak. Dark green means it has very strong power, but it's fine. So what happens is that when the stock on the higher time frame is it's getting a pullback. जब पुल बैक आता है ना तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो जाता है? Lot of people feel that it's selling on the lower time frame, so they start shorting and everything, and they just feel, oh wow, everything is fantastic. अभी stock 100 रुपए का 250 रुपया हो गया, अभी ये नीचे आ रहा है और मेरा सब कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे सेट हो रहा है, अभी ये पक्का 50% गिरेगा. But when it is coming down, you are so relaxed, and suddenly one fine day you see that stock has gone up, rocket, and your stop loss has hit. Why? Because on the higher time frame it was never a selling pressure, it was just a mere pullback, and at any given point of time it will just rocket. It may get rocket. Why? Because the buyers are in control. It's just that they have stopped buying for a particular period of time, but that does not mean that seller has taken control. Seller have not taken control. Sellers are just keeping aside and having and watch ke boss ho kya raha hai market mein, but they have not started putting pressure on it. The buyers have stopped buying. Okay, I will come to it. Rupee Rice, don't worry. I did not get your name, but I will get to you on that later on. Any other question? Rajiv Dixit ji, you will not come to know the RSI, I mean EMA setups, because that's my game. So you may figure it out, but forget about what is EMA and all that is all my lookout. Today it is this, after 1 year it may change also. So don't waste time on that. What you should waste time on it, after the break, I'm going to teach you the buy criteria. Okay? हम ऐसा तो 12th month, 6 months, 3 month में ऐसा तो क्या देखेंगे कि हम कॉन्फिडेंटली मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे. एंड गाइस, आई एम टेलिंग यू, yeah, I will share the chart again. I came to know the sharing has stopped. I'm going to teach you where to put stop loss, where to enter, how to take trade on the monthly time frame, and how to take trade on the weekly time frame. And the best part about my this thing is this recording, I will have already started recording. I will put it on the screen. The best part is whoever will convert from demo to my advance, learning will not change. I am giving you all my learning as an wholeheartedly to you, everything right now. ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ और सीख रहे हो. When you will pay me higher, you will learn something else, because you are giving your most precious time to me right now. I will teach you exactly what I do and what you are supposed to do. So when you will shift into advance, you will be prepared and ready, and you know what to do. Okay. मोहित जी, वो इंडिकेटर में ही आप जब सेटिंग में थोड़ा नीचे जाओगे, वहां पे निफ्टी, यू कैन चेंज द निफ्टी यू फ्रॉम ओवर देयर, डोंट वरी. यस कुणाल शर्मा जी, डोंट वरी. मैं बाद में जाके कोई उसका मतलब, अरे देखा मैंने
बुक खरीदने वाले को कुछ और सिखाया, अब ये मेन स्ट्रेटेजी है, नो, everything will be same. Okay, so let's wait for people to take break. Still more 4 minutes are there. After 4 minutes, uh, just finish off your washroom and everything, and then we'll start again. Till anybody has any questions, just post it and we can figure it out if it's in my scope. पटेल जी, नॉर्मली है ना, मैं डेली टाइम फ्रेम नहीं करता. आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम बिकॉज आई रियली डोंट ट्रेड ऑन इट. मैं काफ़ी बार खाली ऐसे ट्वीट के लिए मैं डाल देता हूँ मैसेज, बट माय फोकस इज ओनली ऑन मंथली टाइम फ्रेम एंड ऑन weekly time frame only, because a daily time frame I cannot take pressure full time के बॉस आज मार्केट अच्छा है कल बुरा है. अगर मेरा मंथली टाइम फ्रेम क्लोज हो गया, लाइक today is the last day of this month and that's why I've taken the class, because next month you will have entire 1 month to do. तो इस पूरे महीने में मेरे पास बहुत टाइम है. जैसे मेरे पास माइक्रो अपोलो माइक्रो एनालिसिस का बहुत अच्छा टाइम था. मेरे बहुत दूसरे स्टॉक्स जो मैंने एनालाइज किए थे उसमें मेरे को पढ़ने का टाइम मिल गया. आई कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली. तो what is corresponds to daily has no importance. Now lot of triangles will come on monthly time frame, but the best part is I will tell you what is going to happen on a higher time frame, कि आपको मंथली टाइम फ्रेम का वो ट्राइंगल इज वैलिड, otherwise that triangle is not valid. Okay, that's the main crisp that after the break we are going to learn what will happen on the higher time frame, that is 12 month, 6 months, 3 months, that I have to worry about. अच्छा, ये monthly time frame triangle is what I have to focus, कि ये stock को मैंने मुझे study करना है अभी. Okay. सर, ऑफलाइन का प्रॉब्लम ये हो जाता है दैट आई नीड मिनिमम 10-15 पीपल फॉर ऑफलाइन इन पर्टिकुलर वेन्यू, बिकॉज माई ट्रैवल टाइम, योर ट्रैवल टाइम, द कॉस्ट, द फूड, द वेन्यू, एवरीथिंग इज वेरी हाई एक्सपेंसिव. तो अगर आई फाइंड 10-15 पीपल इन दैट विसिनिटी से, आप लोगों में से ही किसी ने बोला कि सर हम 15 लोग यही विसिनिटी से है, so of course, when you will buy the system, when you upgrade yourself, you can definitely meet offline. Otherwise, what happens? Online has no cost for you also, me also. Recordings are available. You can study as per your ease. There is no need to, run around one place to another place. Kunal Sharma ji, crypto we don't do is all this because crypto does not have fundamentals. 99% तो आपको ये भी नहीं पता होता वो क्रिप्टो ओन कौन कर रहा है. ओन करने के बाद वो कौन सी डिमैट जैसा कुछ है नहीं, वो किसके अकाउंट में जा रहा है, ब्रोकर्स अच्छा है कि नहीं है. सो आई डोंट डू क्रिप्टोज एंड एवरीथिंग. Cryptos are just price action. You put any EMA, touch of EMA, any particular price action, you can use it. You don't need a strategy for crypto. Basically it's just price momentum. अगर आपने प्राइस मोमेंटम सीख लिया, किसी को भी 10,000 रुपए दे दिए, वो आपको सिखा देगा. ट्रेड इट ऑन लाइक से 1 hour 2 hour time frame. That is, and I'm not saying it's not a good product or something, but I don't have faith on such kind of products. I want something which is in my account. स्टॉप लॉस लगा दिया, उसको मैंने स्टडी कर लिया, ट्रेड ले लिया और छोड़ दिया. इफ एवरीथिंग गोज गुड, रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ, देन आई कैन से क्रिप्टो आज है कल नहीं है, हाउ डू आई नो. सो आई डोंट बॉदर अबाउट क्रिप्टो क्या हो रहा है. Sorry, Kunal ji, I could not help much on that. We have to see mainly, Sagar ji, monthly only. Okay. Yes, Kunal ji, it will work
इन एनी प्रोडक्ट, बट इट शुड हैव फंडामेंटल्स. इथरम और ये सब में नहीं होता फंडामेंटल, सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट थिंग. एज आई सेड, इथरम और ये सब क्या है, कभी नीचे गिर गए ले लिया, और यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग सिप. अगर आपको कॉन्फिडेंस है, देयर इज नो नीड फॉर स्ट्रेटेजी इन सच काइंड ऑफ थिंग्स. जैसे बीटीसी भी इतना बढ़ गया, बट इफ यू फाइंड द ओनर ऑफ द बीटीसी, या आप जो ब्रोकर के पास कर रहे हो, देयर इज नो सच काइंड ऑफ बैंक दैट यू कैन स्टोर. कल उठ के वो कंपनी भाग गई तो आपके सारे बीटीसी चले गए. वेयर इट इज स्टोर, आई हैव नो आइडिया, एंड नाइदर आई हैव bothered to know, because that's not what I'm going to focus. Today is not the focus on crypto or anything. Trivedi ji, again the same thing. You can use this on strategy, use on gold and silver, because it has some base, and there are brokers and SEBI for gold, but it does not have fundamental value. आप ये नहीं बता सकते बॉस गोल्ड का पीई क्या है और गोल्ड की अर्निंग्स क्या है क्वार्टरली. सो हाउ विल यू टेक अ डिसीजन दैट कि मुझे आज ये लेवल पे बाय करना है. वो खाली बस बढ़ते जाता है, गिरता है तो खरीद लो, बढ़ता है तो बेच दो. इट्स अ स्पेक्युलेटिव काइंड ऑफ अ थिंग, और यू कैन बाय एवरी टाइम इट फॉल्स. So you don't need anything. Just keep doing SIP in gold. There is no need for strategy also for that. So that is a particular indicator that I have made a calculation. उस basis पे I have generated that the buyer and seller pressure is there. Okay, it's a very big formula. तो formula के basis पे आता है वो. Of course, the first day of the month. हर month का एक first day of the month और last day, the next month starts the new candle forms. Okay, so uh, it depends 30 and 31 days के हिसाब से every month changes और वो candle नया form करता है. Okay, चलो, break time is over. Now I'm going to take you to the main thing, how to identify the trade. उसके लिए मैं आपको एक simple logic पहले बताना चाहता हूँ. 1 second. I will share my entire screen. Okay. So let us see this as a whiteboard first. एक logic मैं आपको समझाता हूँ पहले. Okay. Let me take the pen. So what happens in the market? हमने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है. And people forget this, that this happens in all the time frames. Okay, but the main intention of the stock from destination A to destination Z, whatever the destination can be, वो कभी भी ऐसे नहीं जाता है until unless there is a speculative stock. Okay, it always goes like this at any given time frame. But if you see on the lower time frames, this part, okay, this areas, the pullback areas, is everybody able to see? Yeah. Pullback areas is nothing but on the lower time frame. ये जो एरिया मैंने मार्क किया वो ऐसे दिखेंगे आपको. Okay, 1 minute please. हेलो स्क्रीन आ रहा है सर, वो शेयर्ड है. प्लीज आप करिए ना. अब है, हाँ बस. थैंक यू. मैं आपको वापस करूँगा. I will start recording again because the recording stopped. Record. Yeah. So what happens? Everybody is able to see this chart?
Everybody is able to see the chart, guys? White. चलो वापस से करते इसको. Entire screen again and great. So everybody is able to see my white chart. तो मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं. On an higher time frame, this areas. Okay, this areas people will be able to see on lower time frames this. So what do they feel? कि बाबा crash आ गया. Unfortunately, the higher time frames like 3 months, 6 months, 12 months, the trends are there. So it's going from destination A to destination Z. तो जब हमारा डेस्टिनेशन ही अगर अप है तो why are we worried about this small time frames errors? हम क्या चाहते हैं कि the minute this kind of trend on the lower time frame are over, this kind of rally should be achieved on a higher time frame. हम चाहते हैं कि हम ये सारी rallies पकड़े. Okay, so when your higher time frame like 1 year, 6 month, 3 month are rising up like this, so why are we bothered about on the lower time frame, that is daily time frame 1 hour 15 minutes is going down? हम सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम पे ही क्यों ना वेट करें and we only see the chart which is only bullish and trade on those time frames. Clear, guys? अरे यार, this is damn irritating. Now everyone can see. So I'll do this again. On the higher time frame, say on the higher time frame, say 1 year, 6 months, 3 months, if your stock from A destination to Z destination, if it wants to go from say 100 rupees to 500 rupees, okay, if it wants to go up 5x, तो वो क्या करेगा? Stock will go up, come down, go up, come down, go a little bit like this way sideways, go up, come down, or maybe go like this way, and suddenly it will touch the direction. But all these areas on the lower time frame, it will only create pressure on you. Okay, why? Because lower time frame में वो क्या बताएगा? ये areas, it will show like this way. It will only show like this way. It will only, और ऐसे एरियाज में क्या होते रहेंगे? RSIs and ये सब सारी चीजें diversions बताती रहेगी. It will only irritate you full time. Okay, it will not help you to trade. वो breakouts देंगे और problematic, it will duck again because it wants all the retail traders to be out of the entire market. The minute all the retailers out, big money क्या करती है? सीधा spike कर देगी because they want the stock to reach a particular destination fast and only they want to reach. They don't want to take everybody in that rally. Okay, so what is it? In lower time frame, it would be perfect. It will be downtrend only. Now let's take an example of Apollo Micro. Okay, in Apollo Micro, let's see this one, this area. Okay, this is a monthly time frame, but see on the 6 month time frame, कुछ लग रहा है कि ये स्टॉक कहां था? It was hardly anywhere gone. It was there only. The trend was clearly stated that it's an uptrend. Or maybe let's see 3 months.
Where is the downtrend in this entire strategy? There was no downtrend. But अगर मैं यही area, this area, if I go on say daily time frame that we have all are trading, can you see this entire irritation? This is the most horrible time frame. 99% of the people will think कि ये स्टॉक बेकार है, छोड़ दो, इसमें कुछ रखा ही नहीं है. There is nothing left in this stock. Why should I even bother to trade? करेक्ट. ये पूरा एरिया आपके लिए इरिटेटिंग होगा. अगर मैं इसको और लोअर टाइम फ्रेम में करूं, से 1 आवर, it will even more get stretched. Let me delete this and make this for you. It will even get more further stretch. फिर ये हल्का सा मूवमेंट ऊपर जाएगा, आप लोग चढ़ जाओगे. अनफॉर्चुनेटली इट विल अगेन गो डाउन. बोलोगे यार मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं इस स्टॉक में. But see, after that the stock rallied like rocket. But taking so much of pressure, entry exit entry exit entry exit, if I would have just told you with my strategy and logic, with my explanation, the entry would have been at this candle at the rate of 121 rupees, and the stop loss was at 95 rupees. Story khatam. Now what it does for 5 months, 6 months, 7 months, that is none of your concern. So if you would have taken a trade here, is this candle at 123 rupees, the stock came down a little bit of 106 rupees. So 1 month, 2 month, 3 month, 4th month, 4 महीने आप लोग की कोई earnings नहीं हुई. You earned nothing. But suddenly 5th month, 6th month, 7th month and 8th month, your earnings from this area to this area, you made 117% return. Is it fantastic or not? Dhruv, it is tough. I agree. But if you want to make money, first of all, decide whether you want to make money or you don't want to make money. Okay. If we decide we don't want to take money, or we don't want to earn money, तो क्या कर सकते हैं? हम 15 minutes trading करेंगे, हम 1 minute करेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम करेंगे. हम आज खरीदेंगे अच्छी मार्केट में, कल मार्केट खराब हो जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. फिर हम वापस से वो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे. फिर हम क्या करेंगे? बॉस एक काम करते हैं, ये सर का तो चल नहीं रहा, हम कोई और सर पकड़ लेते हैं क्योंकि उसका ट्विटर का पोस्ट सुपर आ रहा है एंड ही इज मिंटिंग मनी. Then what you will do? You will learn some Darvas theory of box breakout. Then you will learn some VCP pattern का screener लगा दोगे. फिर तुम कुछ EMAs with volumes लगा दोगे. फिर वो नहीं चलेगा. फिर आप करोगे चलो Bollinger Band का मैं बैंड एक्सपेंशन में मैं पैसे कमाने लग जाता हूँ. Unfortunately, it will not earn because every stock will be setting up in some different kind of parameter indicators. तो आपने RSI और ट्रेंड लाइन सीखा, वो कोई और स्टॉक पैरामीटर्स में यूज हो रहे हैं, लेकिन उस मार्केट के बाद कोई और मार्केट में आ जाओगे. आई आल्सो टीचिंग यू हाउ टू ट्रेड ओनली वन स्ट्रैटेजी थ्रू आउट योर लाइफ. Why will you not have patience in life? Why you don't want to do other things in life? You do job, you create startup companies, you learn fundamental analysis, and the best part about this strategy, you start reading reports given by other gurus also, and just put that stock into that strategy and only invest in those stocks only. You can't do that. How difficult can it be? Are you getting my point, Drew? And is everybody getting the bigger picture that I'm going to post in front of you? Why are you restricting yourself into speculation from intraday, Monday to Friday, and want to only put your hard earned money? वरना आप कैसे एक कंपनी में 100% सपोज कमा लिया क्योंकि सेक्टर और स्टॉक ने रैली कर दिया.
तो आप क्या समझोगे, यही सेटअप परफेक्ट है। और स्टील सेक्टर में जाके और मीडिया सेक्टर में जाके पैसा डाल दिया। मीडिया सेक्टर तो अभी सबसे बकवास परफॉर्म कर रहा है और वो स्टॉक सीधा डक हो जाए। फिर आप क्या सोचोगे, सर मैंने तो सेम सेटअप लॉजिक मैंने यहाँ पे भी लगाया, नहीं काम किया। व्हाई? बिकॉज बहुत सेक्टर में टेलविंड ही नहीं थी। वो पूरा का पूरा सेक्टर ही बेकार है। आपने क्या किया, खाली वॉल्यूम आ गया, खाली एमएससीडी क्रॉस हो गई, आपने ट्रेड कर दिया एंड यू आर डन। व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग इज दिस? इट्स एन हॉरिबल। Okay, so what you need to do is try and figure out how to find a better strategy. Okay, you can find a better solution wala strategy. Okay, now I will teach you how to identify a stock and how to take a trade on the monthly time frame with the most simple way of your trading. Okay, guys, my connection is perfect. Are you all okay? Let's take a poll. Let me figure it out. Yeah, I'm sharing the screen. Don't worry. So I'm share the screen now. Okay, चलो. So first criteria हमें क्या चाहिए? First of all, whenever we are going to come on the screen, हम सबसे पहले देखेंगे 3 month टाइम फ्रेम और 6 month टाइम फ्रेम. क्राइटेरिया हमें क्या चाहिए? Wherever the stock go, let it go. Any candle which entered the gray area and crossed above this two EMAs, okay, and it has to close. Now see this 3 month candle. Ye candle came inside this gray area and it has a body above the both the EMAs. Even the tail is allowed. But the point is, any part of the candle, the tail, the body, or anything should be outside this 2 EMA and the candle should be closed. हम क्या करेंगे, उसकी बॉडी के हाई के ऊपर, बॉडी, इस बॉडी के हाई के ऊपर हम खाली इसको एक थ्रेशहोल्ड बना देंगे. Okay, so the first criteria is both the EMA should be above each other on the 3 month, 6 month, 12 month, whatever time frame you get this setup. Second logic is this candle should have come between this gray area and while the time of closing, any part of the body, that is the shadow or the body closed or whatever, should be above this two EMAs. तो हम उसके हाई, द बॉडी नॉट द विक, बॉडी के हाई के ऊपर हम खाली ये थ्रेशहोल्ड बना देंगे. नाउ वी विल शिफ्ट ऑन द मंथली टाइम फ्रेम. ओके, नाउ व्हाट वी वांट, द मिनट दिस कैंडल, द मंथली टाइम फ्रेम बॉडी candle should close above the threshold. Now if you see, this candle did not closed above the 3 month threshold line. तो हमने क्या किया, एक और 3rd month को क्लोज होने दिया. दिस इज द वैलिड कैंडल. नाउ द डे when this candle high is broken, say 159 rupees, you can take the trade at 160 rupees. Okay, and the stop loss will be the low of this candle which you are taking the trade. मतलब इसका लो क्या है, 112 rupees. You took the trade at 160 rupees. Okay, and you will leave the trade. Now you will not even bother about the trade. अब वो उसके बीच में रहे या कुछ भी करे, your entry. So this candle did not close above the 3 month threshold. This candle did.
और इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने ट्रेड एक्टिवेट किया. सो दैट मीन्स ऑन दिस कैंडल योर एक्टिवेशन वाज देयर. ये कैंडल में कुछ नहीं होता, ये 6 महीने के लिए आपके पास ट्रेड ही नहीं थे और ये कैंडल पे आपकी एंट्री हुई. एंड आफ्टर दिस ट्रेड टुक द मोमेंटम, द स्टॉक विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 4 महीने में ये कंपनी ने आपको 70% रिटर्न्स दी. Okay, so this is how you should have patience. Now I'll give you another example of this. Any for the trade was God 5 failure. Okay, so सबसे पहले क्राइटेरिया हम क्या करेंगे, पहले 3 मंथ में जाएंगे. Now we'll figure out any whether the stock has entered in this gray area or not. So this candle has entered into gray area. Both the EMAs are above each other. Okay, we will wait for this 3-month candle to close, and any part of the body, that is wick or the body, has to be out of this two EMAs. तो ये देखो, इसका ये दो EMA के बाहर है, 2 EMAs are each other, और ये कैंडल इसके ग्रे एरिया में आ गया था. तो मैंने क्या किया, ये बॉडी का जो क्लोजिंग या तो हाई जो भी है, यहां पे मैंने इसको थ्रेशहोल्ड बना दिया. नाउ आई गो ऑन मंथली टाइम फ्रेम. डिड दिस कैंडल, एरो आ गया, सब कुछ आ गया, RS है नीचे, from sellers at it has converted into green dot, buyers are showing into control, the arrow has come, the volumes were there, and the stock was showing unexceptionally undervalued. Now what is undervalued? I will again go to normal and just check. So how are the company making profit? 8,800 million company has grown to 12,000 million, और इसका PE is also increasing. That means PE has expanded. Okay. So did I take trade on this candle? No. I will let this candle close above the threshold, and whichever candle goes above this this candle I will buy. So it went above here. So the trade got executed at 8,452. उसके बाद within this 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, this stock has given an returns of around 35%. Okay, let us take another example of say KSB. तो current trade है, let's not take a current trade, let's take Cummins. Okay, Cummins India. So first my analysis starts from 3 months. Okay, 3 months chart. Now see this 3-month chart. Both the EMAs are above each other. Yes. Did this candle came in this gray area? Yes. Did any part of the body, tail or the body, did go above the gray area or both the EMAs? Yes. तो मैंने 3 month में क्या कर दिया, इस बॉडी के हाई के ऊपर एक थ्रेशहोल्ड मार दिया. नाउ आई शिफ्ट इनटू मंथली टाइम फ्रेम. Did this candle close above this threshold? No. The next month candle closed above the threshold. तो मैंने क्या किया, इसके हाई के ऊपर एक एरो करके अलर्ट डाल दिया. If the stock goes above 3,432, alert me. मैंने इस कैंडल के ऊपर 3,435 पे एंट्री ले ली सपोज. तो how much in this 2 month the stock has given me return? 14%. 2 महीने में ये स्टॉक ने 14% रिटर्न दिए. ओके, से एनी अदर स्टॉक, डज एनीबडी हैज एनी स्टॉक? लेट्स सी. अरे यार, ओके, सो लाइज this stock again. Yeah, I've started sharing the screen. You will be done. Okay. हाँ, ये क्या हो रहा है ना, कुछ तो भी एरर दे रहा है आज. कैन यू ऑल सी नाउ क्यूमिंग्स? ओके ओके, चलो.
सो क्या हो रहा है, जस्ट सी क्यूमिंग्स में क्या हुआ. Both the EMIs are above each other. EMA 1 and EMA 2 are above each other. ये स्टॉक ऊपर से नीचे आया, ग्रे एरिया के बीच में आया और ये वापस ऊपर गया. और any part of the body, that is tail or the body, is above this two EMAs. तो मैंने क्या किया, इस 3 मंथ के चार्ट में इस बॉडी के हाई के ऊपर थ्रेश होल्ड कर दिया. ओके, सो कंसिडर दिस इज लाइक दिस. ये इसके बाद का कैंडल बना ही नहीं, मैंने इस कैंडल के यहाँ पे एक थ्रेश होल्ड बना दिया यहाँ पे. और मैं शिफ्ट हो जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे. मंथली टाइम फ्रेम पे कैन यू सी दिस कैंडल हैज नॉट क्लोज्ड अबव माय 3 मंथ्स थ्रेश होल्ड. दिस कैंडल क्लोज. तो मैंने इस कैंडल को क्लोज होने दिया और इसके हाई के ऊपर, दैट इज 3430, तो मैंने 4335 के ऊपर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने पे डाल दिया. नाउ सी द कैंडल्स आर ओनली गोइंग अप. सो व्हाट हैज हैपेंड, within this 2 months the stock has given approximate around 14% returns. मैंने दूसरी चीजें भी उस टाइम पे चेक कर ली, whether both the RS is positive or not, नीचे बायस का ग्रोथ है कि नहीं, yes, whether the stock is undervalued or not, स्टॉक नेट इनकम बढ़ा रहा है कि नहीं और पी घटा रहा है कि नहीं, मैंने वो भी चेक कर लिया. सो ऑल द क्राइटेरियाज आर माय फुलफिल्ड. Does anybody has any stock that they want to show? Okay, fine. MCX कर लेते हैं. Okay, now see MCX. Okay, let's start our analysis from the stock. यहाँ पे 3 महीने के चार्ट में the stock देखो, ये both the EMAs are above each other. This candle came in the gray area and there is part of the body above 2 EMAs. तो मैंने क्या किया, 3 महीने में जाके इस बॉडी के हाई के ऊपर ये थ्रेशहोल्ड मार दिया. Now I'm shifting to monthly time frame. This candle close above monthly? No. This candle did. तो मैंने क्या किया, इस कैंडल के हाई के ऊपर मैंने इसको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया. So this execution made a high of around 34% in just 2 months. Is the stock exit or not is a secondary point. एंट्री लॉजिक ये है कि हमें 3 महीने के कैंडल से ट्राई करना है. लॉट ऑफ टाइम यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड 3 month टाइम फ्रेम लाइक. तो व्हाट यू शुड डू, you should go on 6 monthly time frame and figure out where the entry logic of same setup sets. अगर हम स्मार्ट होते यार, हमें ये एमसीएक्स के बारे में पहले ही पता चल जाता. तो कैन यू सी दिस स्टॉक came between this area, both the EMAs are above each other and this candle have closed और उसका बॉडी इज अबाउ दिस 2 EMA. तो मैंने यहाँ पे थ्रेशहोल्ड मार दिया होता और मैं मंथली टाइम फ्रेम पे चला जाता. तो मंथली टाइम फ्रेम पे दिस कैंडल क्लोज्ड अबाउ दिस EMA, इसके हाई के ऊपर मैंने ट्रेड इस कैंडल पे एग्जीक्यूट कर दिया होता. देन माय ट्रेड वुड हैव अर्नड मी अराउंड फ्रॉम हियर टू हियर इज नथिंग लेस देन 155% रिटर्न्स. ट्रेड हमें मंथली टाइम फ्रेम पे ही लेना है एट द क्लोजिंग बेसिस उसके हाई के ऊपर. बट हमें मंथली टाइम फ्रेम पे 3 मंथ से लेके 6 मंथ से लेके 12 मंथ पे हमें चेक करना है कि बॉस हैज इट एंटर्ड दैट थ्रेशहोल्ड और नॉट. लेट अस चेक, डज एनीबडी द the stop loss is the candle that you are taking the trade उसका लो, the threshold candle के नीचे का लो. ओके, हिंद रेक्टिफायर, चलो ठीक है, इसको चेक करते हैं. ओके, सो आवर एनालिसिस स्टार्ट्स फ्रॉम 3 months, 6 months, 12 months. तो मैं सबसे पहले 3 months में जा रहा हूं. हेलो, हाँ वही मैंने कर दिया, वही कर रहा हूं मैं. So now Hind rectifier. Now see, the trade started from here. People have started trading now. This candle, it came between this gray area and went back up. Threshold, monthly time frame. This candle went and closed above the monthly time frame.
ये कैंडल ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट हुआ. So execution was 719 rupees and the stock has already went to 2000 rupees. It has already given you 170% returns. Okay, now let us see TVS Motors. So 3 महीने के चार्ट पे जाते हैं. स्टॉक ऊपर गया, ये देखो, ये कैंडल इस ग्रे एरिया के बीच में आ गया. This tail has gone above this to both the two EMAs. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी ये जो बॉडी थी, इसकी हाई के ऊपर मैंने एक थ्रेशहोल्ड मार दिया इन 3 months टाइम फ्रेम. Monthly I am going. This candle closed above the threshold. Our arrow has come. नीचे green dot है, ऊपर both the dots are RS. RS is both green, and entire fundamental is telling us that it is undervalued. Okay, 16,800 रुपए की कंपनी, so 16,800 million company grew up to 23,847 million. And it is continuously growing. See, 16,000 million, 17,000 million, 18,000 million, 19,000 million, 22,000 million, 23,000 million. 60 PE company has reduced to 58. That means your net income is rising, but PE is falling. What happened? Your trade would have executed somewhere here. Okay, your stop loss is here, and the stock even in this market is giving you returns of 16%. The exit is still not been done. The stock is just rallying. Okay. Now let us take another stock. Yeah, but my indicator is telling you that candle is not in red. My calculation is showing you the candle is in green. So that's fine. Okay. Now, what overzone? There is no overzone. So let's take an Dixon right now. ओके, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे. मैंने ऑलरेडी इसको मार्किंग करके रखी है, सो दिस विल बी अ ब्रिलियंट एनालिसिस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 3 months. देखिए, दिस कैंडल हैज, फर्स्ट ऑफ ऑल सी बोथ द आरएस आर अबव ईच अदर. यस, इस कैंडल केम बिटवीन द ग्रे एरिया. यस. हैज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी गॉन अबाउट द 2 EMAs? यस. तो ये क्लोज हो चुकी है 3 महीने की, तो उसका बॉडी हाई क्या है? ये. I'm not taking the tail, I'm just taking the body wala high. ठीक है. Now I'm shifting on the monthly time frame. Okay, this monthly time frame, can you see this candle has closed above the threshold? तो मैंने इसका हाई मार दिया. Now this trade has been executed in this area. Okay, so 17,220 the trade has been executed. इसके लो पे 12,000 पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस डाल दिया. अब मैंने इसको स्टॉक को छोड़ दिया. ओके, व्हाई? बिकॉज बोथ द आरएस आर पॉजिटिव, नीचे ग्रीन है, एरो आ चुका है, और सारा का सारा स्टॉक मेरा अंडर वैल्यूएशन में चल रहा है. कैसे? 3,607 मिलियन, 4,000 मिलियन, 7,100 मिलियन, 7,900 मिलियन, 11,900 मिलियन, 10,900 मिलियन, 11,900 मिलियन. पहले स्टॉक मुझे 121 पी पे मिल रहा था जब 3,678 मिलियन था. अब स्टॉक मुझे मिल रहा है 72 मिलियन. तो दैट मींस द स्टॉक इज राइजिंग इन नेट प्रॉफिट एंड द पीई इज गोइंग डाउन. डिड आई नॉट एक्सप्लेन? अगर नेट इनकम बढ़ते जा रहा है और नेट और पीई घटते जा रही है, देन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो माय ट्रेड इज राइट नाउ executed at 17,000, say 50 rupees, or what is the high of this stock? 17,070 rupees. So 17,080 rupees. So is that high made? Yes, 17,280. The trade has been executed. My stop loss is 12,200. So what is mota moti stop loss of this stock is around 25%. 25% is my stop loss. Okay. So 25% स्टॉप लॉस पे मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस डाला और स्टॉक को छोड़ दिया. Why? Because my 3-month stock is telling you the stock is only in uptrend. EMA1, EMA2 is above each other. 3 month में candle came into the green and again went up. One part of the body is above. मैंने threshold मार दिया.
Monthly time frame, I'm waiting for any of the candle to close above that threshold. Uski high के ऊपर I'm buying the stock, putting the stop loss below that candle, and I'm letting it go. Company is good because 3000 million से 12,900 million company profit बना रही है, और P has reduced. Now I have lot of time. So I had 2 months before my trade got executed. Figure out Dixon company में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. Now you need to have patience for 4 months, 5 months, 6 months till the stock does not perform. And everybody knows what Dixon company is capable of, and making iPhones and making Samsung phones, making laptops, making refrigerators, making every single electronic items that the company then is only expanding. It's one of the giant company. Dhruv, I will do the setting for you in the live market tomorrow, because I think so everybody can see that gray line, only you are not able to see it. Okay. So now we'll take another stock like Shakti Pump log bol rahe. Let's see Shakti Pump. Now see, Shakti Pump का ये selling pressure क्यों आया? Okay, let's understand this. It made a high of 1400 and now it is legging down. It is only and only because of 1400 crore company started reducing its performance. देखो यहाँ पे 3878 million, 4084 or 4123. Even if the profit is increasing, can you see this? जो company was performing on quarter on like 160, 164, 40, 17, 5, and now quarterly it is giving only 1% return. Can you imagine the company which was growing quarter on quarter basis more than 50%? Now it has grown only 1%. और उसके सामने उसने क्या किया, 17 का पीई जो था सडनली 27 पीई कर दिया. So what happens? The company perform, net income is rising, but it is not rising at that pace, but P is rising at a higher pace. So what happened? The company investors are seeing कि boss रुक जा. So now when the company is in fair valuation and overvaluation, company is finding difficulty. Now if we want to invest in this company, say next quarter the result comes better, तो हम क्या करेंगे? 3 months. Now can you see this candle has entered into the gray area and this part of the body is outside. So what I'm going to do, I'm going to just mark a threshold over here and shift on monthly time frame. Now I will wait any candle, maybe next month, maybe next to next month, maybe next to next to next month, maybe after 5 months, when company performance increase, a candle will close. A candle will close above this threshold और इसके हाई के ऊपर मेरी एंट्री बनेगी. Till that time, in lower time frame also it is speculating, I don't care. My entry is fixed until unless month में इस थ्रेशोल्ड के ऊपर, आई मीन ऑन मंथली टाइम फ्रेम, इस थ्रेशोल्ड के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाता, तब तक मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा. नो, वो अपने आप ही सेटल होगा. रूपी पार राइसर, वो अपने आप ही सेट होगा. हमें चेक करना है 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ में. जो ये सेटअप मैंने बनाया, सपोज 3 मंथ में आपको ये सेटअप नहीं मिल रही है, आपको 6 मंथ में सेटअप मिलेगी. बोथ द फर्स्ट टू EMAs आर अबाउट ईच अदर, कैंडल वेंट बिटवीन द गैप, दैट ग्रे एरिया, और बॉडी के ऊपर आपने थ्रेशोल्ड मार दिया, और फिर आप मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो रहे हो. हम एग्जीक्यूट खाली मंथली टाइम फ्रेम पे ही लेंगे, बस यही घोड़े की तरह हमें करना है. देयर इज नथिंग एल्स. You don't need to check whether the candle has closed or not. Even if the candle has closed below that gray area, is any part of the body has gone about that 2 EMAs in 3 months, 6 months. Okay. So you don't have to worry about whether the 3 months may close hua hai ki nahi ho. Even if there is a wick, that is shadow has gone about that
two EMAs. Ha, that's a good question. Now, unfortunately, what has happened? I have this. Can you all see my website, guys? आप सबको वेबसाइट दिखा? वेबसाइट में मैंने मेरा एक स्कैनर बनाया था राइजिंग मॉडल में, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर डूइंग सम चेंजेस फॉर इट. सो ये सेटअप आपको बाद में मिलेगा. ये वेबसाइट जब रेडी हो जाएगी मैं आपको एक्टिवेट कर दूंगा. टिल दैट टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस डैशबोर्ड. ओके, आई एम गिविंग यू दिस डैशबोर्ड. Let me click twice, thrice. Now what you do, every Friday after market has gone shut, मतलब मार्केट ईओडी पे क्लोज होना चाहिए. Have beautiful dinner with your family, go out for dinner, watch a movie, come back, let them sleep. Friday, Saturday, Sunday, रात को एसी चालू करो, work hard on those days. Whatever stock this screener एटलस, ये जो मैंने आपको दिया है, उसमें जो भी स्टॉक नाम में आते हैं, योर एनालिसिस विल बी ऑन व्हाट टाइम फ्रेम? 3 मंथ. इफ द 3 मंथ टाइम फ्रेम में आपको सेटअप नहीं मिल रहा है, बोथ द ईएमएस आर नॉट अबाउ ईच अदर, इट इज क्रॉसिंग डाउन, गो टू 6 मंथ. वहां पे सेटअप नहीं मिल रहा है, गो टू 12 मंथ. बट द मिनट यू गेट दैट सेटअप, मार्क द थ्रेशहोल्ड एंड राइट इट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर के बॉस डेली ये थ्रेशहोल्ड के ऊपर क्लोज आना चाहिए. That means the world is sleeping on Friday, Saturday, Sunday. They are partying by making losses. Pathetic. You all will work hard on Friday, Saturday, Sunday. Today I am doing my class because I'm working hard on Friday, Saturday, Sunday. Okay? Because of a lot of technical glitches, something has happened. That's a different story. But when I'm teaching you all, I'm also working hard at that point of time. Okay, I've given you the scanner. Minute my website will be ready, because there are a lot of technical problems are coming. I have given some changes. The minute website gets ready, my website will give you all the stocks. You have to only work on those stocks. Okay. Now let us give one more example of, let's do analysis of Cupid. Yes, Kunal, I will do one company of this company also, US also. Okay. So let's take a company on, say, Cupid. Okay. Because Cupid we had traded, so we are just giving you an example. Okay. Now see, this stock came between this EMAs, this area, gray area. EMA did not went down each other, and some part of the body is above each other. This EMA, see, लोग बोलेंगे सर क्रॉस हो गया, but if you zoom in, you will come to know that EMA had not crossed each other. See, first EMA is still above the second EMA. Can you see there is still the gap? तो मैंने क्या किया, ये बॉडी के हाई के ऊपर मैंने थ्रेशहोल्ड मार दिया, लेट इट क्लोज. ये 3 महीने का कैंडल क्लोज्ड है. दूसरे कैंडल्स में रेड, ग्रीन, ब्लू, आई डोंट केयर. Part of the body was above this 2 EMA and both the EMAs were above each other. ठीक है. What happened? The companies were overvalued, suddenly undervalued आ गए. Okay. So what did I do? I made the threshold on 77 and I shifted on monthly. Monthly, this candle did not close above the threshold. This candle did. मैंने क्या किया, ये कैंडल के ऊपर हाई मार्क कर दिया, and this candle got executed. This trade got executed in this candle. Stop loss 77 rupees. Okay. How much is my stop loss? 38%. Now, if you guys feel 38% is too much, you can avoid the trade. Or you can take the trade capacity half. Say I wanted to invest 20,000 rupees, I will invest only 10,000 rupees.
But if you feel, nahi yaar sir, 30, I don't want to risk anything beyond 25% or 30%, avoid that trade. Okay, there is no compulsion in trading the trade. Okay, the arrow came, the trade, the candle closed. Okay, this candle executed at 113 rupees. 77 is my stop loss. From here till here, the stock has given me in just 3 months 60% returns. Okay, 57% ले लो round figure, or make it 50%, or make it 40% also in 3 months. Guys, is it less? I will teach you exit. Vallabh ji, first understand what is the entry criteria. Exit तो बाद में देखेंगे. Okay, I will teach you the exit criteria. Chill. पहले हम entry देख लेते हैं. Let's take one thing after another. Okay, now you understand the power of higher time frame, guys. 3 months 6 months पे एनालिस करो आराम से, शांति से, डेली पे उस थ्रेशोल्ड के ऊपर क्लोज होने दो और फिर उसके हाई के ऊपर बाय करो. दैट मींस यू नो व्हाट आर यू गिविंग द स्टॉक. भाई तू फंडामेंटल स्टॉक है, तेरा सेक्टर अच्छा है, तू मंथली में भी बीच में 30 डेज में तुझे जितना नाचना है नाच ले. यू डांस एज मच यू वांट, but ultimately after all the traders stop loss that you have executed, who are doing say EMI crossover, who is doing MACD, RSI, stochastic, सबके stop loss hit कर दे. Ultimately you have shown me the direction to go up. Simple. I am letting all in between the liquidity providers to provide all the liquidity. After that, when stock has decided to go above the monthly threshold, 3 months threshold, 6 months threshold, I am then only buying on monthly time frame. In between what is happening, I am not bothered. I'm just calm. I am just bought, put the stop loss, and I'm letting the stock do whatever it wants. I gave you, buddy, that this Parekh ji, ये जो मैंने आपको लिंक दी है ना, मेरा इसका एक सेकंड, आई प्रोवाइड यू अगेन. ऐसे मत बोलो कि मैंने आपको नहीं दिया, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है. मैं आपको ये देखो, इसमें कम से कम 50 स्टॉक आएंगे, लेकिन सेटअप सब में नहीं आएगा. सेटअप खाली वो ही 10 स्टॉक में ही आएंगे. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, वर्क हार्ड ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बिकॉज वो कैंडल क्लोज हो चुकी रहेगी. यू विल बी वेरी क्लियर. यस, जो कैंडल थ्रेशोल्ड, जिस कैंडल ने थ्रेशोल्ड का ब्रेकआउट करके क्लोज हो गया रहेगा, सो दिस इज द थ्रेशोल्ड, मंथली कैंडल क्लोज्ड. ओके, यू विल टेक अ ट्रेड हियर. तो ये जो कैंडल है उसके लो का आप स्टॉप लॉस डालोगे. सिंपल. ओके, इज दैट सिंपल. Now let us take a stock, say just a second, guys. Let me take 3 months time frame and let's figure out any trade. Yeah, Nava. Okay, Nava, this stock on the 3-month time frame, did it came below, is first of all two EMAs above each other. Let's take one trade at a time. Did it came between each other? I mean, were the two EMAs above each other? Yes, I will come. Paresh ji, let's take this. Okay, Nava, two EMA above each other on 3 months. Yes or no? Let's go. 3 month, two EMA above each other. Okay, yes or no? Type yes or no first of all. Three month, whenever you analyze, Mohit ji, you have to come on 3 month only chart.
Okay, I'm explaining you. Lemon tree also I will come, Patelji. Okay, let us first do Nava analysis totally. From top to bottom आपको समझ में आ जाएगा एंट्री कहाँ लेनी है और ट्रेड को छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है. ओके, नावा स्टॉक worth this two EMA above each other, EMA 1 and EMA 2 above each other. ठीक है, बाकी सब भूल जाओ. Okay, 2 EMA above each other, first rule. Okay, the second rule, did the 3-month candle came between this gray area or not? Now the rule number 2, did it came? Yes or no? Guys, please stop writing the names of the stock. We'll take that later. First understand the rule. नाम स्टॉक का नाम जान के क्या करोगे, पहले रूल तो समझ लो. अंडरस्टैंड द रूल. ओके, डिड दैट स्टॉक केम इन दैट ग्रे एरिया और नॉट? यस, इट केम. ओके, नाउ did the body closed above those two EMAs? Went above, not even closed, went above those two EMA? Yes. तो मैंने क्या किया, इस बॉडी के हाई के ऊपर, जो भी हाई था मतलब उस बॉडी के ऊपर गया वो मैंने उधर थ्रेशोल्ड मार दिया. Simple. Till here simple. Yeah, but I want to calculate current ना परेश जी. मेरे को तो आज का जो पुराना हो गया स्टोरी छोड़ दो. अगर मैं आज 3 महीने के चार्ट पे बैठा हूं तो मेरे को पता चल रहा है कि नहीं. सिंपल. स्टोरी ओल्ड बता के मैं क्या करूंगा. Okay, so this was the current candle which came, or this candle also has fulfilled your criteria. Okay, so if you forgot this, this is your threshold. This is what you are trying to tell me, Paresh ji, Rushabh ji, Rushabh Parekh ji. Even this criteria fulfills this candle. Okay, this came in middle and this candle body is out of this both the EMS, so this became my threshold. Latest पकड़ लेते. ठीक है, what I did, I went to monthly time frame. Does this candle closed above the threshold? Yes. This candle executed my trade? Yes. But if you see, my all this criteria is showing me overvalued. I will not buy an overvalued in my portfolio, even all the criteria matches. Simple. Yes. समझ में आ गया परीक जी एंड एवरीबडी. इवन ऑल माय क्राइटेरिया इज फुलफिलिंग. करंट कैंडल, 2 EMAs about each other in 3 months. Candle came between the gray. Part of the body is above both the EMAs. Threshold. Monthly candle closed above. This candle has to take the high of this candle. Amazing. My fundamental analysis, boss, ये overvalued stock है, जाने दो इसको. ये भले ऊपर जाएगा, बट हमें हमारे पोर्टफोलियो में ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं चाहिए. फॉरगेट इट. करेक्ट नरेश जी? सुपर्ब, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. इट कैन नॉट गेट डिफिकल्ट देन दिस. ओके, किसी ने मेरे को बोला अभी कीरी इंडस्ट्री. चलो कीरी इंडस्ट्री ले लेते हैं. सबसे पहला मेहनत में करूंगा 3 महीने का चार्ट. 3 महीने का चार्ट मेहनत का भी कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक ये थ्रेशोल्ड के बीच में आया ही नहीं है. इज 6 मंथ कमिंग? नो, 6 month has also not come. Has 12 month come? Yes, 12 month has come. Now let's see 12th month. This candle, to both the EMAs were above each other. This candle, latest one is here. This is my threshold. Okay, monthly candle, this candle closed above. This should have been my entry. But why will I entry? My entire stock is telling me it's an overvalued. ये जो डेली टाइम फ्रेम में बच्चे लोग ये करते रहते हैं ना, ब्रेकआउट द ट्रेड और ट्रेड, हम ओवरवैल्यूड स्टॉक में एंट्री ही नहीं लेंगे. If we would have not taken overvalued stock entry, this would have not been a fatal trade. Wrong trade. Why? Because my stock, my fundamental analysis is saying it's an overvalued stock. Why will I take it?
screen gone. Yeah, again I will show the key. See, overvaluation. Even my entire trade setup is happening. Why will I take this trade? I would have not been in that. It was an overvalued stock. Story finish. Any other stock is there? GRSE people are saying. Okay, let's do. Okay, GRSE. Here. In 3 months, the stock came inside. Both the EMAs are above. The stock came in between. Okay, some part of the body is about 2 EMAs. I put the threshold at the body high, okay, and shift on daily time frame. This candle closed above the threshold. High of this candle, here is the trade. How much rally did it give the stock in just same month? And in 2 months, 71% rally. Are kya hai yaar? Pathetic thing is happening. I'll again do the GRSE, guys. Okay. In 3 months time frame, look at this trade. Look at this candle. Both the EMAs are above each other. It came between this gray area. Some part of the candle was above the 2 EMA. What I did? I marked the threshold over here. Okay. Shift to monthly time frame. This candle closed above the threshold. High of this candle. In this candle, I took the trade around 2000 and say 50 rupees or 60 rupees. The stock rallied nearly around 70% in just 2 months. An entire concept was undervalued. Okay. So this is how you should analyze. So हमें लगता है कि ये ट्रेड सर बहुत टाइम लगता है. So GRSE will take time. But what about the other stocks will trigger? Okay. Why will you not be able to take Dhruv Bura? You will be able to take even more higher returns than that. वो तो आज रिटर्न हुआ ना, वापस से रिटर्न होके ऊपर जाएगा and may give you 150, 170 rupees. Why are you seeing only this trend? What did I tell you? The stock will go up, retrace, go up, retrace, go up. So if the destination is started pointing is A, how do you know what is the what do you know what Z is the destination? Can be 1500% also. Why are we just seeing कि कोई भी डेस्टिनेशन A to Z स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाएगा, वो ऊपर नीचे ही करेगा. हमें डर क्या है कि वो स्टॉक हमेशा ऊपर नॉन स्टॉप ही जाना चाहिए, थोड़ा भी डाइवर्ट होता है हम डर जाते हैं. ओके, एंड आई विल टीच यू हाउ टू एग्जिट आल्सो. ओके, so that black arrow comes on monthly, lot of time it will come directly into that position only. Okay, now see Asian Paints, you know, Trill. See Trill. 3 month में सेटअप इसका बन रहा है. So my threshold in 3 month is this. Okay, but if I try 6 months, none. 12 months, none. If you see, my threshold is here, and if I shift on monthly time frame, see, on any given breakouts on the lower time frame, I am not bothered. मुझे monthly time frame ट्रिल में इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, सिंपल. जब ये क्लोज हो जाएगा मैं उसके ऊपर बाय कर लूंगा. Got the logic? Yash, for your trail. Let us take one US stock. One brother was saying again and again. Where did that go?
ठीक है, वो वापस आएंगे तब देखेंगे. नाउ somebody said Nvidia. See, I'll give you, Dhruv, let's only understand the entry first. मैं exit पे आता हूँ so that everybody is on the same page. Now see, one brother said Nvidia. Okay, चलो Nvidia जाते हैं, कॉपी किया मैंने और इधर Nvidia डाल दिया. Nvidia Corporation. Okay. Now 3 months time frame. This went here. Yeah. Did it came in between? Yes. Okay. Both the EMAs are above each other. Yes. So what is my threshold? This. मैंने इसको मार्किंग भी करके रखा था for my US clients. Okay. Monthly. This candle closed above it. What should be my actual entry? $160 should be my entry, and 130, 135 should be my stop loss. Is the stock undervalued? Yes. Simple. Vaibhav, did you get it? So Ramco Industries, Ramco Industries. Okay, let's see 3 months time frame. See, the latest candle has two EMAs above each other. Latest candle went inside the gray area. Okay, this is my threshold and monthly time frame. This candle closed above it. Now this is my entry already triggered and 276 is my stop loss. Khatam ho gayi story. Undervaluation. Okay. Now what I'm trying to tell you, brother, forget about resistance and all. ये सब चीजें छोड़ दो. Once you know what is your entry, what is your stop loss, now you need to figure out whether you want to trade this or not. Now forget about support, resistance, ये वो, we have to go about that. हमको जो सीखा है ना लाइफ में कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये स्टॉप लॉस एरिया है, कुछ नहीं, हमारा ट्रिगर हो गया है एंट्री, हमको हमारा स्टॉप लॉस पता है. नाउ इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड, यू टेक अ ट्रेड. यू डोंट वांट टू टेक अ ट्रेड, डोंट टेक अ ट्रेड. But don't fall into that daily resistance, support. Boss, if 3 month time frame wants to go above, because every new high has been created only after going above the previous resistance. तो अगर कोई बंदा बाई नहीं करेगा बिकॉज प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो FIIs DIs तो स्टॉक रॉकेट करके लेके जाएंगे. हम क्या करेंगे तब तक? हमारा एंट्री ट्रिगर हो चुका है. Now the point is that 15 days, 20 days you need to figure out what Ramco industry is doing that gives you more extra support to buy it right now. If you feel नहीं Ramco industry ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है, then don't buy. I am teaching you both कि बॉस उस 10 days तुम्हारे पास ट्रिगर होने के पहले है, monthly has closed. Now next month trade will execute. उसके बीच में काफी दिन रहेंगे, 10-15 दिन. Figure out you want to buy it or not. Don't fall into the trap of support area. That happens only, you know what, when lower time frame people wants to do 20 rupees stop loss, 40 rupees target. Boss, I'm talking about 50, 60, 70, 80, 120% target. तो 20% स्टॉप लॉस डाल के हम रिस्क तो ले ही सकते हैं. हमको क्यों ये पूरा दिन हिस्ट्री में जाके स्टॉप लॉस ट्रिगर, ये रेजिस्टेंस प्लॉट करने हैं, सपोर्ट प्लॉट करने, ये कौन करता है? जिसको अपने कोर्सेज बेचने हैं और प्राइस मोमेंटम बताना है, पूरा टाइम आपको स्क्रीन के ऊपर ग्लू रखाना है. मैं आपको बोल रहा हूँ फ्राइडे सैटरडे संडे ही आपको एनालिसिस करने हैं. पुट द लेवल, द ट्रिगर एरिया, बिकॉज यू आर लेटिंग द मंथली टाइम फ्रेम क्लोज. Next month you take the trade. Simple. I'm not asking you to plot. Did I ask you to plot any resistance? मैंने बात नहीं की. मैंने कोई सपोर्ट की बात नहीं की है. मैंने कुछ भी बात नहीं की है. Yes. Now let us come to one of the most important area. That is okay. See, you go into depth. पंजवानी सर जी, that you go into depth कि ROC क्या है, ROI क्या है, that is different. My strategy is telling you minimum इतना analysis तो कर लो.
If you say I don't want to invest into the stock or which has low below 15% ROE, avoid that setup. I am not asking you to take that setup. You may have different criterias of yours. What I'm trying to tell you is, if all your criteria is setting, do monthly, 12 month, 6 month time frame strategy, what I'm giving to you. And once my website जो issue खत्म हो जाएगा, my stocks are coming. In that I'm giving you sector analysis also. Do only that. Your chances and the probability of earning will be much higher. Of course, Mohiji, you can do GTT. Take the trade GTT, put your stop loss in GTT and forget and do your work. If 3 months your stop loss are not hitting, what are you going to see every single day of your life? Stop loss hit हुआ, hit हुआ. अरे जब हुआ ही नहीं फिर pressure क्या है? And if 2 months your stop loss are not hitting, that means third month quarterly results are coming. And monthly time frame has given you spike for a reason. FII knows what you all don't know. But that breakout on daily time frame will irritate you every single day. Okay, so I am taking you out and you see that 3 month, 12 month, 6 months ka trend, it is only going up. So that means people are expecting better results. And unfortunately some result comes out bad and hits your stop loss. Boss, वो तो आप वैसे भी stop loss ले रहे हो. All I'm giving you a better sector, better setup, fundamental net income increasing company, and my perfect 12 months, 6 months, 3 months setup on a monthly time frame trading. And I will be there with you all every single day. Imagine the power of those higher time frame. अगर स्टॉक रैली कर गया सर 40, 50, 60% तो कहीं नहीं जाना. ये हम रोज 5-10% के लिए क्यों रो रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है मुझे. Now, the most beauty exit you can do, forget about what I have to do. Just exit on the weekly time frame when the stock goes below 125 EMA. Till the time after you have taken the entry on the monthly time frame, your stock is not going below 125 EMA on weekly time frame. 125 EMA weekly time frame. Hold. Just keep moving the stock with your 125 EMA. Every time, every week, 125 EMA का point अलग रहेगा. खाली shift your stop loss. Story finished. There cannot be more easy strategy than this on this board. Rushabh ji, I want your stock not to exit for 3 years also. अगर हमें अगर 80-70% रिटर्न्स मिले ही जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है. समटाइम व्हेन यू फील कि सर ये स्टॉक ने अच्छा रिटर्न्स दे दिया, कहीं और अच्छा सेटअप बन रहा है क्योंकि उस सेक्टर में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, exit in a profit and move to another stock. और अगर आपका सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग है, मंथली ने कुछ समझ के ही रैली देना शुरू किया रहेगा क्योंकि इस बीच में जो 30 डेज में जो मोमेंटम होना था ना, उसमें ट्रंप ने क्या बोला, इसने क्या बोला, सब कुछ फैक्टर इन हो जाते हैं इसके अंदर. And after all this factorization, stock has decided, no, I want to go up no matter what. No, stop loss is not that. Stop loss, I told you what is it. When the stock start performing in your direction, you have to follow on weekly 125 EM. Purav Shah ji. Consider करो you are earning 30-40%. Now you need to move your stop loss. तो आप क्या करोगे? Weekly पे 125 EMA पे जो उसका last dot है, वहां पे आप उसका stop loss you will keep shifting it. Simple. Yeah, I'll show you.
So in Cupid, your entry would have been somewhere here. Once the stock will keep performing, all you have to do is, abhi currently your stop loss is this. Okay, you keep shifting. Once the EMA cross your stop loss, what do you have to do? Keep shifting stop loss at this point. Okay, now after 1 week or 2 week, stocks will perform. 125 EMA will reach over here. Shift the stop loss here. If everything goes well, 125 EMA will shift here. After 1 week, 2 week, you just shift your stop loss over here and let the stock do what the hell it wants to do. It is very simple. Because lot of time 100 EMA or 125 EMA performs as a very strong support. Okay. Now see Lupin. I'm already figuring out. See, both the EMAs are above each other on 3 months. The stock came between the gray areas. This body went, some part of the body is above both the EMAs. This is the threshold. On monthly, I'm waiting for the stock to go above and close above the EMA. And above that, I will go for the trade if pharma sector is good. Simple analysis, guys. Price touch 125, GTT लगा के stop loss छोड़ दो. Every weekly you will find new 125 making new levels. Just keep GTTs on 125. Closing कुछ नहीं, touch किया, exit, forget it. Okay. Now Prakash ji, what we will do, I'll give you one site. Okay, 1 minute. Here is it. Okay. Now this is the NSE site which has all the list of the sectors. Okay. So now let's see. यहाँ पे क्या लिखा है? Nifty Auto Index. Correct? वहाँ पे लिखा है. So what are we going to type on the trading view chart? CNX Auto. Okay. Now let's see over here. CNX Auto. Three-month. This came in between. This is my threshold. On monthly time frame, does this candle close above the threshold? Yes. So what do you think? What is auto sector? Booming or going down? Is auto sector good or bad? We did the same exactly what we did in the stock market, stocks. 3-month candle, both the EMAs above, body came in the gray area, some part of it is above 2 EMA, body के high के ऊपर threshold, monthly time frame went above it, it is showing us totally bullish. So I will write auto sector bullish. Now I know I need to figure out only auto sector. Now what auto sector consists of? Tractors, diesel engine, petrol engines, tires, glass sector, auto ancillary. ये सारे sector, ये सारे industry falls into auto sector. Now this scanner that I gave you, which I will again give you, please save it. Yeah, again I will give you. Yes, EV. Again this over here I am giving you. फ्राइडे, सैटरडे, संडे कोई ना कोई ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स तो इसमें आ ही जाएंगे.
sit, analyze it. You like it, make the threshold, wait for the monthly to close above the high of the monthly, go for the trade, put the stop loss below the thing, and follow 125 EMA on weekly. There is no harm. So simple. Then what is the next sector over here? Let's see CNX chemicals. Okay. Okay, CNX chemicals are not there. Let's see IT. Nifty IT. Okay. Nifty IT. Now, if you see 3 months, this two EMAs have crossed below each other. तो ये टाइम पे थ्रेशहोल्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है. Now I'm going to 6 months. 6 months, this candle, two EMA is above each other. This candle came between the gray area. Lot of part of is above both the EMAs. This is the high of the body and I made an threshold. अब जब तक monthly time frame does not close above this threshold, I am not going to bother about IT stocks. So if somebody tells me, boss, Infi is the best, how do I care? How do I care about IT stocks? Make particular stock is moving up and down. It's a trap. So my focus right now only is in auto stock. Now what I'm going to do, I'm going to take another one more sector, say pharma. Okay, so let us type over here Nifty Pharma. Now Nifty Pharma, I will start again from 3 months. Okay, fabulous. Now see, this both the EMAs in 3 months are above each other. Yes. Is some part of this body is above up? Yes. So I made the threshold. Now on monthly time frame, this candle closed above the threshold. So now until unless pharma sector does not go above this candle, pharma is not bullish. But yes, there was a candle who went above the threshold. So I will write pharma sector is worth analyzing it, but not till now. If my 3 months candle go above it, I will do it. Simple. So now pharma sector is good, but not worth investing. So I will keep three categories. Immediate bullish, not so bullish but good, not bullish at all. So auto goes into bullish, not so bullish pharma, not at all bullish is IT sector. Sunil ji, you can do the trailing stop loss at 125 EMA if you are very bullish, very like नहीं मेरे को तो exit जल्दी होना है, then you can put 60 EMA also on weekly time frame as your trailing stop loss. Okay, so you don't miss too much. So 60 EMA for very short traders and long term traders 125 EMA. Okay, and guys, डोंट वरी, जैसे ही मेरा वेबसाइट रेडी हो जाएगा उसमें सेक्टर एनालिसिस विल कम फैबुलस. ओके, लेट अस टेक अनदर सेक्टर, से रियल्टी सेक्टर. ओके, सो CNX realty. Now 3 months time frame, this sector is crossing below each other, not interested. 6 months, yes, this candle close and there is some part in the candle which is inside the gray area and body is above the EMAs. तो मैंने यहाँ पे आके threshold मार दिया. Monthly time frame, until unless none candle does not close above this EMA, this threshold bar, I am not concerned about द रियलिटी सेक्टर. तो कोई भी स्टॉक उस पर क्रॉस ओवर दे दे, मुझे क्या करना है. सो दिस इज हाउ इट इज. ऑटो बुलिश, रियलिटी नॉट बुलिश, फार्मा
bullish, but not now. Okay, so this is how you can create your entire every 2 weeks you can create your list जो keep jumping here and there क्योंकि sectors will keep going up and down. Slowly in my website we are going to introduce industry also जहाँ पे आपको glass industry, tire industry, जो sugar industry जिसके कोई index नहीं है वो भी उसमें आ जाएंगे. And next class when I will teach you how to create that also. So in that way you will be very much do that. Okay. So Umesh ji, SML Isuzu. So if such kind of rally happens, you can literally do this. Just shift your stop losses on the higher time frame. Generally, what happens? Weekly time frame are for so long traders that it comes here and it bounces back. Okay, 125. You say, nahi sir, mujhe itna I cannot handle so much. So what you can do, you can trail your stop losses, guys. It's a good question that he asked. Shift your stop losses on EMA 6. Okay, of the gray area. Gray band, EMA 6. Trail your stop losses at EMA 6. Okay, that will also save a lot of money of yours. But that's how. Now let's see defense sector. Nifty defense. Okay. 6 months. अभी इसका कोई setup ही नहीं बन रहा है. Okay, so you can just see this breakout, simple breakouts. The sector has not spent time only on a longer time period. So if it is a general breakout, the sector is into momentum. Anything else? PSU Bank. Okay. PSU Bank. Three months. Okay, now see this. Both the EMA above each other. This candle came inside. Some part of is above the EMA. This is the threshold. Okay. Now see. This candle closed above this high. Yes. PSU sector was bullish. Okay. PSU bank sectors. This is your stop loss. Now PSU bank sectors like Bank of India, SBI, you can figure out which stock you can just only see those stocks and you can figure out which PSU bank sectors fit in your strategy. Yes, Dhruv Patel, you can use EMA 6 as your trailing stop loss all the time. Not on the weekly, monthly. Weekly is too fast. Okay, in weekly, if you are not able to handle 125, on monthly, take EMA 6 as your trailing stop loss all the time. We want to earn more, not less. हमें घड़ी घड़ी अंदर बाहर नहीं करना है. Okay, so monthly time frame you can trail your stop losses on EMA 6 of the gray band. And if you want to say नहीं सर मैं बहुत ही long term हूँ, so you can do 125 EMA on weekly time frame. वो जाएगा ऊपर वापस नीचे आएगा, वापस टच करेगा वापस ऊपर जाएगा. So on weekly time frame it can take 8-9 months to touch the 125 EMA and go back up. Lot of time stocks like Dixon, Reliance, ICICI Bank, who has a very long-term vision, can do 125. Consumer sector, CNX, consumer. Consumption हो सकता है. Now see this consumption sector. See, nice find. Both the EMA above, the candle came in the green. Some part of the candle has gone above the 2 EMAs. Threshold, monthly time frame. This candle closed. Simple. Now you find out what stocks comes under consumption and which stock in
3 months, 12 months, 6 months, gave a closing above the threshold, you can find out the entire thing. Both the lines are green, below one is green, entire fundamental is showing you undervalued, net income is rising at the higher pace, and the PE is rising, maybe slow or is falling, and you can take the trade on in that stock. It's simple. So we are doing first every Friday you do sector analysis, Saturday Sunday you do only those stocks which fall under that thing, and you can take the trade. And by that time, if the sector is strong, my scanner that I gave you will come up with one or two stocks from that stocks. All you have to do is Friday, Saturday, Sunday you have to work hard. Okay? So it's 5 o'clock, guys. So I will end my this class today. I will activate that. I'll do one thing now. यार, 1 minute. छोड़ो. Copy or here. Guys, I'm putting this Pine script here. नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो. I am going to gift you this indicator only. चलो. I am going to paste this on the WhatsApp group, YTA WhatsApp group. 1 minute. Money Expo. कहाँ चला गया? एक सेकंड. I have pasted the code in that Money Expo YTA system ka. Copy it in the Pine editor and put it on the chart. That candles will automatically become green red as per my strategy. It's a gift to you all today. Okay. So please copy that thing that I have given you. Go to trading view, Pine editor, remove whatever is there in the Pine editor, paste that what exactly I given you, and on the right hand side there will be written add to the charts. Add it, that all your candles will become red green as per my strategy. Okay, I don't want to do activation and all. Tomorrow if you want to be part of this group or not, I'm just gifting you that entire indicator for free. Please use it throughout your life. That's not, it's very simple thing, nothing to have. So Mohit ji, first you at least take 15 days to work, see how that you are in that group, guys. See how 15 days we are working together, and then we will have after 15 days one more class. We will take your sessions, talks, jo bhi hai, and then at the end of the month. So total 3 classes will be there. Today was the first class. After 15 there will be one class, and in the end of the month there will be one class. Okay. Uh, just 1 second, I will paste that group ka link. Mm, yeah, whoever is not in that group, please join with this link. Just a second. This क्या हो गया ये?
Okay, guys. So 1 minute, guys. This is 1 minute. Somebody has, without my permission, just created a group which is creating so much of confusion. I have no idea why would somebody do that. I had. Have you all received my email, guys? In that, I have posted a group. You all join that group, okay? So, guys, today we will end the session here. The recording will. I will again. Purav, you email, WhatsApp me your email ID. I will again send the same email to you. Okay. So let's see how it goes, and I will see you directly tomorrow in the live session in the market, and let's communicate with each other. Okay. Chalo, guys. Bye. It was a very nice session. Sorry for in the beginning it was going up and down, but I think so we covered up well later on. Thank you so much, guys. Bye. You mail me. Everybody who doesn't have got the group or messages or email, please WhatsApp me your email ID. I will make sure the email reaches you. Okay. Bye.